there's no one else who loves me like you used to. Sometimes we're not ourselves, there's no one I can turn to. And I know all the feelings that we shared are in the past. And I know
good morning. On completing 49 years of its glorious existence and rich history, Corporation Bank Officers Organization is hosting its 22nd triennial conference at this glorious meeting hall, SANGHANIKETAN in Mangalore. Yet another reflection of a commitment to internal democracy. This conference was held at Mangaluru in the years 1974, 1975, 1981, 1998, 2007, 2016, and 2019 in the past. अब बैंकिंग का उद्गम स्थल मंगलुरु 8वीं बार सीबीओ के त्रैवार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और हम आप सबका इस महान शहर में सहर्ष स्वागत करते हैं। CBOO salutes you all for empowering the organization with your majestic presence, for reinforcing your faith and solidarity. We are extremely happy to inform the August gathering that this inaugural session is covered live through webcast. Amidst the dramatic changes in the bank over 49 years, the officers as a community went through a process of building a collective movement. Started in 1973, CBOO emerged as a strong and vibrant officers' union with a dedicated membership of almost 90% of officers of Corporation Bank. Efficient bankers who brought laurels to their bank and active trade unionists with a social concern. 26 January 2022 marked the 50th Foundation Day of CBOO. Its activities, both in Corporation Bank and outside, have earned CBOO a name for it as a distinct trade union in its class with the motto Stand together, work together. Reminiscing the path it has traversed with trials and tribulations, threats and opportunities, struggles and achievements, to rededicate ourselves to the common cause of entire officers' community. This conference shall ignite the latent energy in us and prepare us for the challenges ahead. We will now start the proceedings. It's our privilege to lead all the leaders and the guests to the dais. Shri Brajesh Kumar Singh, a young, energetic, aggressive, and the ever active secretary of the reception committee and the secretary Swasti. I request Shri Naresh Eppa to lead Shri Brajesh to the dais. The vibrant and humble, but at the same time the leader who can rise to the call of times, the General Secretary of CBO, Shri Satish Shetty, will be led to the dais by Shri Vinod Gaikwad. A motivating and highly knowledgeable personality is the president of CBO, Y. Sudhindra. Escorting Shri Sudhindra to the dais will be Shri Shel Tuppad. It's our privilege to have amidst us the General Secretary of National Organizations of Bank Officers, NOBO, Shri Viraj Tikekar. I request Shri Suryanarayan Rao to escort Shri Tikekar ji to the dais. We have with us the General Secretary of Bharatiya Mazdoor Sangh, Karnataka State, Shri H.L. Vishwanath. Shri Vikram Nayak will lead him to the dais.
we are happy to state that our own corp banker, Sri Ratish, General Manager of Union Bank of India, is with us today as one of the guests of honor. Sri Anand Sahu will lead him to the dais. The chief guest of the day, our patron, philosopher, guide, and a force behind us, the National Secretary and in charge of the Financial Secretary in BMS, Shri Girish Chandra Arya, will be escorted by Nitin Kumar to the dais. It is customary in Indian tradition to seek the blessings of the Almighty before commencement of any function. To invoke the blessings of the Almighty, we have the little flowers from Prajna Counseling Center to lead us to the prayer. Kindly raise for the prayer.
Thank you, Little Flowers. God bless you. For the corp bankers, today is a holy day. It is the foundation day of Corporation Bank. This day, we cherish the moment of the history by offering tributes to a great human being, our founder, Shri Khan Bahadur Haji Abdullah Haji Qasim Saheb Bahadur. We request the dignitaries to place flowers at the feet of Bharat Mata and Vishwakarma seeking their blessings. We also request the dignitaries on the dais to offer floral tributes to two great men, Shri Khan Bahadur Haji Abdullah Haji Qasim Saheb Bahadur and Shri Dattopant Tengadi. Sri Khan Sahib, a great philanthropist, founded Corporation Bank on 12th March 1906, 116 years ago, with an intent to kindle Swadesh spirit among the populace. The seedling had grown into a gigantic banyan tree, infecting finances into the economy, giving direct employment to scores of Indians and indirect employees to multiple times. It's very unfortunate this great institution has been consigned to the pages of history from 1/4/2020. Shri Dattopant Tengadi founded Bharatiya Mazdoor Sangh in July 1955 with the base sheet anchors nationalism, would work as a genuine trade union to keep itself scrupulously away from party politics. The strong ethos with which it was built was nurtured, and today it is the largest trade union in India with a membership of almost 1 crore in all states. Jai! Thank you, gentlemen. May I now request Shri Satish Shetty, General Secretary CBOO, to welcome the guests, invitees, and the gathering. Over to our General Secretary. Good morning, respected President Sri Y. Sudhindra, Chief Guest of today's program Sri Girish Chandra Aryaji, National Secretary and In Charge Banking and Financial Sector of Bharatiya Mazdoor Sangh, Guests of Honor Sri H.L. Venkatesh, General Secretary of Karnataka BMS, Viraj Tikekarji, General Secretary NOBO, Sri Ratish are our General Manager in CBOO Mangalore. Our another guest of honor, Sri Rabindra Babuji, FGM Mangalore. He went to, I think he had, that's a program in Udupi on account of the foundation day of the bank, and he will be joining later.
Reception Committee Secretary Sri Brijesh Kumar Singh ji. There are many invitees, dignitaries here. Amongst us, we have our former President Sri Eknath Baliga, former Vice President Raghuraman ji, our many executive colleagues, the former colleagues CBROA representatives, our retired officers association representatives, press and media, and our brothers and sisters. This conference is very unique on several counts, I can say. First of all, for the first time, maybe I am becoming the member of the CBOO. We are conducting the conference general body for a day. Otherwise, it used to be always 2 days. Now, our inaugural function, we have made a capsule. Even to the dignitaries, we have provided the very, I can say, short period for speech and all those things, because we have to conclude it within 1.5 hours. This is one of the change. This is due to the circumstances. You are all aware. After merger of the banks, change of the name of the organization, adding the institution name, means Union Bank name, was one of the requirement. Management was also requesting us to do it at the earliest, so that in the records, the Union Bank continues. That was the statutory requirement also for us to submit the required records to the Registrar of Trade Unions. With that background, even though it was this program we have scheduled within a very short period, normally our general body used to take place after 2-3 months preparations. This we are doing at least, I think, 28 or 29 days short notice. But still, I feel we have arranged at our level best to make all our dignitaries, guests comfortable. I hope if you compare earlier years, maybe some shortcomings may be there. Kindly pardon us because of the hurried preparations. Now we will be concluding our inaugural session before 11:30. Thereafter, we will start our business session here itself. We will try to conclude as early as possible so that our business session will not affect much. Now, this day, as already we have paid respect to the founder of the Corporation Bank, this is also one of the important aspect. The day why we have fixed this. I think this is an occasion for all of us to pay tribute to the great founder of Corporation Bank. That's what we thought of. In the last 20 months, the pain what we have endured in trying to safeguard the image of CBO is beyond one's comprehension. With fond hope that all is well that ends well, we have planned this All India conference on this day in the heart of the cradle of banking, Dakshin Kannada region. With heavy heart, I should say that this conference will be the last conference as members of CBO. This is very, very painful. The curtains of CBO will come down. Of course, we will be emerging with the new name. That's different. But still, in the heart, pushing the name of CBO to the pages of the history without recurring, it pains a lot. I think our senior colleagues who have gathered here, they will feel more pinch about this, but we don't have any option. This is the requirement. This general body meeting was supposed to be held in January 2022. However, our efforts could not fructify due to COVID-19 restrictions on congregation prevailing then. Fortunately for us, the restrictions have now been eased and we have today congregated here as CBO members for the 22nd time in its nearly 5-decade history. Earlier also we had issued notice for the general body to conduct in the April 2021, but suddenly the COVID increased, therefore we have postponed once again.
With merger of our bank with Union Bank of India, it has become imperative for us to change the name of CBOO to depict the name of Union Bank of India, and a decision on the same will have to be taken during the course of business session that follows the inaugural function. Now, I will come to the most important task on hand to welcome our guests and the gathering. First, I will try to introduce briefly our guests on the dais. Sri Girish Chandra Arya, National Secretary and In Charge Banking and Finance, BMS. An active and dedicated leader in the field of trade unionism. He has been active in various social activities like education and grooming children from most deprived sections of society and organizing the most marginalized sections of society. He has worked tirelessly towards harmonizing industrial relations in the CPSEs, including Power Grid Corporation of India, and has achieved great amount of success. He represented BMS in IR Code tripartite consultations in the Ministry of Labour and Employment. He is a dedicated trade unionist whose sole aim is to bring a real change in the lives of the workers of our country. Sri Girish Chandra Arya started his employment career as radio mechanic in Bharat Electronics Limited and rose up to the rank of assistant engineer and retired in the year 2016. I extend a warm welcome to him. I request Vishwas Rehavgankar to offer him a flower bouquet to welcome. Sri Ravindra Babu, our Field General Manager, FGMO Mangalore, he will be joining later. Just I will give his brief introduction in his absence. He will be joining us later. Our guest of honor today, Sri Ravindra Babu is a self-made man having endured huge hardships in his childhood. He hails from coastal belt of Andhra Pradesh state. Born in 1970, family circumstances forced him to take up employment at a tender age of 19. He joined Andhra Bank in 1989 as a clerk immediately on completion of 12th class. He did his graduation and post-graduation after joining the bank, studying after the office hours. Due to his persistent efforts and determination, he secured promotion from one scale to another as and when he became eligible and rose to the rank of general manager in March 2021. In his 31 years of career, he worked in diversified fields of Forex, Treasury, Corporate Credit before heading RO Saifabad as regional manager. On elevation as general manager, he headed SAMHANIKETAN at Central Office Mumbai and is currently heading FGM Mangalore as field general manager. During our interaction with him, since assuming the charge of FGMO, we had a very cordial relationship. He is an attentive listener and is always bubbling with energy. He will be joining later. Next, our General Manager Sri R. Ratish, working in CBOO Annex Mangalore, he is a man of steely resolve. Born in 1963, he joined Corporation Bank in 1984. Due to his persistent efforts and determination, he secured promotion from one scale to another and rose to become General Manager in June 2020. He is a specialist officer in credit, and in his 38 years of career, he worked at various places across the country from Trivandrum in south to Mumbai in west to Chandigarh in north. On elevation as general manager, he worked in operations division at Central Office Mumbai. He is currently placed at CBOO Annex Mangalore as in charge of transactions banking department. I am fortunate to know him for a quite long time. He has been a staunch member of CBOO. He is very soft at heart but very firm in his resolve. Many fear to talk to him, while those close to him love to be with him. I extend a warm welcome to you, sir. I request Sanjeev to offer a flower bouquet to him.
Sri Virat Tikekar, General Secretary, National Organization of Bank Officers, is our another guest of honor. Sri Virat Tikekar is also the BMS National Central Executive Committee member. Sri Tikekar ji, born in September 1962, joined Bank of Maharashtra in September 1983. He is currently working as Senior Manager at Pune. He was introduced into Executive Committee of Bank of Maharashtra Officers Organization in 1996 and has risen up the ranks to become the General Secretary in 2009. He is currently donning the role of a mentor as working president of the organization since 2019. He is also a trustee of Provident Fund Trust of the bank. He is also a member of Wage Revision Negotiation Committee of UOBU representing NOBO. Tikekar ji is fully aware of the proceedings of the bipartite negotiations, also functioning of the United Forum of Bank Unions. He is a signatory to the 8th joint note, which we popularly call as 11th bipartite settlement. I extend him a warm welcome and request Y.S. Anand to offer me a flower bouquet. We have with us Sri H.L. Vishwanath, our another guest of honor. He is the General Secretary of Bharatiya Mazdoor Sangh, Karnataka. He is a practicing advocate for the last 22 years. He was additional government pleader at Bhadravati and former syndicate member of Kuvempu University. He is associated with BMS since last 12 years, serving as Shimoga District Secretary. He is currently the State General Secretary of Bharatiya Mazdoor Sangh. I extend a warm welcome. I request Pramod Chaudhary ji to offer a flower bouquet to him. There are many dignitaries amongst us. If I take name, it will be because so many of our retired colleagues, our friends, our well-wishers are here. Already I have told. My Guru, Sri Eknath Baliga is here. Our mentor, Sri Raghuramanji is here. Many of our executive colleagues, our friends are here. I extend a warm welcome to all of them, all of you, sir. It is our privilege to have all of you here today. My welcome to all our members who have come across the country. Even though our gathering is not like earlier conferences, I was telling our guests, it used to be in thousands. Now with the change in the position, the gathering, really I'm very happy that across the country many members they have joined us here to do this general body meeting and take important decisions. Once again, I extend a warm welcome to all. Thank you very much. Thank you, General Secretary, for the sweet introduction of our guest and welcome address. प्रकाश ही इस ब्रह्मांड का स्रोत है। अंधकार को मिटाने वाला प्रकाश स्वतंत्रता तथा ऊर्जा का प्रतीक है। परंपरा के अनुसार कार्यक्रमों का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करने से ही होता है। ज्ञान का दीप प्रज्वलन करने के लिए आज इस भव्य समारोह को उद्घाटन हेतु में आज के मुख्य अतिथि श्री गिरीश चंद्र आर्य तथा अन्य अतिथियों से सादर निवेदन करती हूँ। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति
Take us from the state of untruth to truthfulness, from darkness to light, and from mortality to eternity. Let peace prevail within me, around me, and all over the universe. सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतङ्गमया ॐ शान्ति 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 जय जय असत्यದಿಂದ MS जिंदाबाद CBOO Zindabad. Zindabad, Zindabad. Thank you, gentlemen. Now it is Chief Guest of the Day, Shri Girish Chandra Arya, who will deliver his inaugural address. Over to you, sir. मेरा आप सभी को प्रणाम। मेरे लिए बहुत शुभ अवसर है कि मैं यूपी से आकर के और आज मंगलोर स्मार्ट सिटी में स्मार्ट लोगों के सामने मेरे को दर्शन करने का मौका मिला है। आपने मुझे इस दर्शन के लिए अवसर दिया है। पहले मैं हृदय की गहराई से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। सीबीओ के अध्यक्ष भाई सुधींद्र जी, कैनरा बैंक कॉरपोरेशन बैंक नहीं कहना चाहिए, यूनियन बैंक के जनरल मैनेजर श्रीमान रितीश जी, कर्नाटक प्रदेश के बहुत ही कर्मठ एडवोकेट हैं, प्रोफेशन से एडवोकेट हैं, मगर बीएमएस का फुल टाइम काम करते हैं, ऐसे मेरे भाई एचएल विश्वनाथ जी, जो बैंकिंग में हमारा ऑफिसर्स में भारतीय मधुसंका ऑफिसर्स में जितनी भी बैंकों में काम चलता है उसका हमारा ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स, नोबो, वो सामने लिखा हुआ है। उसके यशस्वी जनरल सेक्रेटरी और मेरे छोटे भाई के समान भाई विराज टिकेकर जी, सतीश जी का मेरा हमारा हालांकि 4 लोगों का संपर्क, हम 4 लोगों से, ऐसे भाई एकनाथ बालिगा जी, रघु रमन जी,
तो इनके नेतृत्व में हमारी पहली भेंट आप लोगों के संपर्क में आए, तो ऐसे पेशेंट, धैर्यवान, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट सब पर मैं जोर दे रहा हूं, क्योंकि मैंने जो बैंकिंग में आने के बाद जो देखा है, तो बैंकिंग की दुनिया में ट्रेड यूनियन ईमानदार नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, मगर उस काजल की कोठरी में भी अपने आप को सीबीओ के जनरल सेक्रेटरीज और ऑफिसर्स अपने आप को साफ सुथरा बनाए रखे, तो मैं उनको सैल्यूट भी करता हूं और सम्मान भी करता हूं कि जैसे वातावरण में काम कर रहे हैं उस वातावरण से बाहर निकल करके एक डिफरेंटली काम करना। तो ऐसे यशस्वी जनरल सेक्रेटरी सतीश जी, और आपने ये जो आयोजन किया है, इस आयोजन के रिसेप्शन कमेटी के सेक्रेटरी भाई ब्रजेश सिंह जी, व्यक्तिगत रूप से वो भी मेरे को बहुत प्रिय हैं, और यहाँ पर उपस्थित समस्त बहनों, भाइयों, और कुछ यहाँ पर वेटरन लीडर्स आए हुए हैं जिन्होंने इस सीबीओ की नींव रखी थी, ऐसे सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं कोई स्पीच तैयार करके नहीं आया हूँ, आप लोगों से सिंपल बात करने आया हूँ। भारतीय मजदूर संघ क्या है ये बताने आया हूँ। मेरी बहन एड्रेस कर रही थी, तो उनको जो लिखा हुआ था उसमें से उन्होंने बोला कॉमरेड। मैंने सतीश जी से कहा कि उनसे कहिए कि हम सब बंधु बांधव हैं, कॉमरेड का कीड़ा हमने निकाल करके फेंक दिया है। हम एक राष्ट्रीय सोच के साथ देशभक्ति में ओतप्रोत लोगों का संगठन है। तो इसलिए जो है, तो मैं आज आपको 2-3 विषयों पर, समय का मुझे बताइए सतीश जी। हाँ ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा समय का। भारतीय मजदूर संघ क्यों? भारतीय मजदूर संघ 1955 में एस्टेब्लिश हुआ, और 1955 में जब एस्टेब्लिश हुआ तो उस समय देश के अंदर आज़ादी के बाद ट्रेड यूनियन मूवमेंट अपने पीक पर था, चरम पर था, मगर एक कन्फ्लिक्ट था, एक क्लास कन्फ्लिक्ट था, और जो उसकी आइडियोलॉजी थी वो भारतीय परिवेश की वो नहीं थी। मतलब किसी भी ट्रेड यूनियन को, किसी भी संगठन को, किसी भी देश के आदर्श और मूल्यों के हिसाब से चलना चाहिए, तभी वो देश के हित में काम कर सकता है। मगर अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट चल रहा था वो मार्क्स के जो है आदर्शों के आधार पर चल रहा था, और मार्क्स जो है पाश्चात्य संस्कृति थे, ओतप्रोत था, पाश्चात्य था। तो जब ये चलता रहा तो एक विचार आया कि लोग सुबह को देशभक्ति की बात करते हैं और अपने फील्ड में जाकर के इंकलाब और लाल सलाम और इंडस्ट्री को बर्बाद करने का काम करते हैं, संघर्ष का काम करते हैं। तो श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ये संघ के प्रचारक थे, इनका ट्रेड यूनियन से कोई लेना देना नहीं था। तो एक विचार बना कि यदि हम राष्ट्र निर्माण का काम कितना भी करते रहें, यदि ट्रेड यूनियन में जो है कम्युनिस्टों का वर्चस्व रहा तो देश की इंडस्ट्रीज बर्बाद हो जाएंगी, और इंडस्ट्रीज बर्बाद हो जाएंगी तो देश प्रगति नहीं कर सकता, देश पुनः विश्व गुरु नहीं बन सकता। इसलिए हमको ट्रेड यूनियन में आकर के जो वर्ग संघर्ष है उसको दूर करना है।
तो हमने एक पारिवारिक ट्रेड यूनियन के लिए केवल मैनेजमेंट और यूनियन नहीं है, ट्रेड यूनियन के लिए तीसरा पक्ष भी है, वो है राष्ट्र। तो राष्ट्र की अवधारणा को बीच में लेकर के श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कुछ कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के इसकी स्थापना की 23 जुलाई 1955 एट भोपाल। मतलब ना कोई यूनियन, ना कोई मेंबर, ना कोई कोष, और जीरो से शुरू किया। हम तो किया तो क्यों किया? क्या इतनी ट्रेड यूनियंस चल रही थी तो एक ट्रेड यूनियन और चलाने के लिए हमने ट्रेड यूनियन बनाई? नहीं। हमारे उद्देश्य क्या थे? हम एक नॉन पॉलिटिकल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन होंगे, हम प्योरली अपॉलिटिकल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन होंगे। तो अपॉलिटिकल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन होंगे तो काम किस आधार पर करेंगे? तो काम हम करेंगे रेस्पॉन्सिव कॉपरेशन के आधार पर। रेस्पॉन्सिव कॉपरेशन बोले तो क्या क्या होता है कि सरकार या मैनेजमेंट वर्कर्स के और इंडस्ट्रीज के हित में काम करेगा तो हम उस सरकार और मैनेजमेंट का सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे, स्वागत करेंगे और सम्मान करेंगे। यदि वही सरकार और कोई मैनेजमेंट श्रमिकों के हितों के विरुद्ध काम करती है, इंडस्ट्रीज के हितों के खिलाफ काम करती है, तो भारतीय मजदूर संघ जितनी मनोभाव से स्वागत सम्मान में उतरा था, उसी मनोयोग से उस सरकार का विरोध करने के लिए सड़क पर आकर खड़ा होगा और जो उसकी ताकत होगी उस ताकत के अनुसार आंदोलन करेगा। दैट इज कॉल्ड रेस्पॉन्सिव कॉपरेशन। तो रेस्पॉन्सिव कॉपरेशन से काम करेंगे और नॉन पॉलिटिकल बनकर के काम करेंगे, अपॉलिटिकल बनकर के, गैर राजनीतिक बनकर के काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने 55 में शुरू किया तो 67 में जाकर के बीएमएस का पहला अधिवेशन हुआ। तो जैसे आपका कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो भारतीय मजदूर संघ का फर्स्ट कॉन्फ्रेंस 1967 में दिल्ली में हुआ। तब हम ये मान सकते हैं कि जो एक सेंट्रल ट्रेड यूनियन की कैटेगरी को प्राप्त करने का रास्ता था, हमने 12 साल के अंदर, 12 इयर्स के अंदर जो है हमने वो जर्नी पूरी की। और उसके बाद मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम 81 में गवर्नमेंट जो है हर 10 इयर्स में एक वेरिफिकेशन करता है ये जानने के लिए किसके पास कितनी यूनियन है, कितने स्टेट्स में यूनियन है, कितनी उसकी मेंबरशिप है। तो 81 में ही हम सेकंड पोजीशन पर आ गए। सब कम्युनिस्टों को हमने पीछे छोड़ दिया, केवल इंटक जो कांग्रेस की थी उससे हम पीछे रहे। 91 में हम नंबर 1 हो गए। 2001 में हम नंबर 1 ही नहीं हुए। मेरी सिस्टर जो कह रही थी कि भारतीय मजदूर संघ की 1 करोड़ की मेंबरशिप, तो वो मेंबरशिप 1 करोड़ तो हमारी 2001 में हो गई थी और हम नंबर 1 कंसेक्यूटिवली फॉर मोर देन 3 डिकेड्स वी आर 2 और नंबर 1। क्यों? क्योंकि हमारे आदर्श, हमारे काम करने का तरीका एक अलग से है। हम देश को एक अलग से दिशा देना चाहते हैं। तो श्रद्धेय ठेंगड़ी जी, उन्होंने बहुत, वो फिलोसफर थे, थिंकर थे, बहुत नाम था उनका। 63 में चाइना में उनका 1 घंटे का जो उनका राष्ट्रीय रेडियो था उस पर 1 घंटे लाइव टेलीकास्ट वो हुआ था, ब्रॉडकास्ट। तो हम अभी जो है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस समय भारतीय मजदूर संघ की 5500 से ऊपर यूनियंस हैं ऑल ओवर कंट्री और मोर देन 2.5 करोड़ हमारी मेंबरशिप है।
जितने में बाकी सारे ट्रेड यूनियंस हैं उतने में हम अकेले हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि कल हम बात कर रहे थे, आपकी सीईसी चल रही थी, तो उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि भाई हम रिटायर हो गए। तो भारतीय मजदूर संघ ने क्या एक नीति बनाई कि आज तक मैं सर्विस कर रहा हूं और संगठन की सेवा कर रहा हूं, कल को मैं रिटायर हो गया तो जाकर के घर बैठ जाऊंगा? नहीं, एक पर्टिकुलर एज के बाद भारतीय मजदूर संघ के अंदर पद मुक्ति है, कार्य मुक्ति नहीं है। इसलिए जितने भी यहाँ वेटरन लीडर बैठे हैं, जितने भी जो है मेरी तरह रिटायर्ड लोग बैठे हैं, वो ये समझ लें कि उनकी सेवाओं की, उनके अनुभव की हमको अति आवश्यकता है। इसलिए वो कभी भी जो है ये ना सोचें कि वो सीबीओ से रिटायर हो गए तो अब जो है सीबीओ का काम नहीं करेंगे। हमारा काम है कि जो परिवार, जो बच्चे अपने जो है बुजुर्गों की मान सम्मान करते हैं और सेवा करते हैं, वही घर संपन्न होता है, वही घर प्रगति करता है। जो अपना आईएएस बन गया और पिता किसान है, तो जो आईएएस बनने के बाद में पिता की अवहेलना करता है, वो लड़का कभी यशस्वी नहीं हो सकता, वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता। वो आईएएस बन सकता है मगर संस्कारों से बहुत नीचे रह जाएगा। इसलिए जितने भी हमारे वेटरन लीडर्स हैं, जितने भी हमारे रिटायरीज हैं, वो हमारे लिए बहुत सम्मानित हैं, बहुत उपयोगी हैं और हम उनका सम्मान करेंगे। और आप सबसे निवेदन करेंगे कि वो बाय वर्च्यू ऑफ एज दे आर रिटायर्ड बट दे आर फंक्शनरी ऑफ सीबीओ। और बल्कि थोड़े दिन बाद मैं साहब से निवेदन करूंगा, आप बीएमएस की रचना में आ रहे हैं, तो मैं जुलाई 16 में रिटायर हुआ। जुलाई 16 में रिटायर हुआ। मैं, मेरे ख्याल से मेरा एवरेज वर्क, महीने का एवरेज लगाएंगे तो मेरा 14 आवर्स मेरा वर्किंग है। और मैं सर्विस में था तो कुछ छुट्टी ले लेता था, मगर बीएमएस में आने के बाद मैंने छुट्टियां नहीं ली। इसी तरह से सारे टाइम घूमते हैं। अब मैं बीएमएस को आपको जर्नी बता दी कि बीएमएस कहाँ से चला, कैसे चला, तो आप बिल्कुल सोच करके बता सकते हैं, किसी से खुल करके बोल सकते हैं, मैं भारतीय मजदूर संघ का एक ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेटिव आपके सामने कह रहा हूं कि हमारा जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम जो करेंगे वो बैंक के लिए करेंगे, जो करेंगे कर्मचारियों के लिए करेंगे, जो करेंगे राष्ट्र के लिए करेंगे। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारा लिखा हुआ होता है राष्ट्र हित, उद्योग हित, मजदूर हित। तो हम इस सिद्धांत पर काम करने वाले लोग हैं और हम जो सोच लेते हैं, क्योंकि सोचते हैं तो बहुत सोच समझ कर सोचते हैं। मैं आप पर आ जाता हूं। आज यहां आप जो कॉरपोरेशन बैंक का कर रहे हैं, ये लुप्त हो चुका था, चाहे ये आपका लास्ट कॉन्फ्रेंस है, मगर आज कैनरा कॉरपोरेशन बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन का आप चाहे लास्ट ही कर रहे हैं, मगर मर्जर के बावजूद भी आप इस कॉन्फ्रेंस को कर पा रहे हैं। ये कुछ ना कुछ ताकत इन लोगों के धैर्य की है और इसमें कुछ ताकत बीएमएस की है। हमारी चेन्नई में राष्ट्रीय कार्य समिति चल रही थी। ये 3-4 लोग हमसे मिलने के लिए आए। भारतीय मजदूर संघ की वर्किंग बता रहा हूँ, बाकी बैंक तो मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं। मैं तो एक इंडस्ट्रियल वर्कर हूँ। मैं तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, जो रडार और वो बनाते हैं, ज़िंदगी भर टेक्निकल काम मैंने किया है। मैं तो बैंक में जो है केवल अपना खाता ऑपरेट करना जानता हूँ, उससे ज़्यादा बैंकिंग नहीं जानता मैं। तो बैंकिंग के बारे में मैं आपको क्या बताऊंगा, बैंक मेरे से बहुत ज़्यादा आप जानते हैं। मैं केवल संगठन की बात बताऊंगा और संगठन जिसके साथ हैं आप सम्मान के साथ रहेंगे। तो इसलिए जब जो हमारे पास ये लोग आए तो इन्होंने कहा कि हमारे साथ इस तरह से सब चल रहा है। हम आईबॉक के थे, आईबॉक में चले गए, मगर अभी जो है हम फील कर रहे हैं कि हम जो है इन लोगों के द्वारा चीटेड हैं। मैनेजमेंट भी हमारे साथ जो है स्टेप मदरली बिहेव कर रही है। हमको समझ नहीं आ रहा क्या आता है। तो जब हमसे मिलने आए तो हमने कहा कि भारतीय मजदूर संघ केवल जो उसके मेंबर्स हैं, जो भारतीय मजदूर संघ के लिए काम करते हैं, केवल उन्हीं के लिए काम नहीं करता। भारतीय मजदूर संघ
एक मैंने भजन कल सुनाया था आपको, गीत सुनाया था बीएमएस का कि मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम और शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम। तो जो भी कोई हमसे जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, जो भी हमारे पास आएगा अपनी व्यथा लेकर के आएगा तो उसकी व्यथा सुनना हमारा काम है। तो हमने इनसे, सतीश जी से और सुधींद्र जी से कहा था कि आपकी जो भी हम सेवा कर पाएंगे, आपके साथ उत्पीड़न हो रहा है, आपका हैरेसमेंट हो रहा है, आपका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इस हैरेसमेंट के खिलाफ हम जो है आपके साथ खड़े हैं। आज ही आपको वचन देते हैं और आपसे कभी ये नहीं कहेंगे कि आप बीएमएस पहले ज्वाइन करिए फिर हम आपके साथ चलेंगे। यदि हम आपके काम को कराने में सफल भी हो जाते हैं तो भी हम आपसे ये नहीं कहेंगे हमने आपका काम करा दिया, आप बीएमएस को ज्वाइन कर लीजिए। सतीश जी मैं ठीक कह रहा हूं? सुधीन जी, हम उसमें लग गए। हमने सारा जो है स्टडी की तो मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की तो वो जो सामने बात करने वाला था वो मालूम है कौन था? आईबीए का चेयरमैन। हमने अपनी बात समझाने की कोशिश की, समझ में नहीं आई। हम डीएफएस में गए, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो सारा जो है बैंकिंग सिस्टम को देखता है। हम वहाँ गए तो वहाँ पर जो है सेक्रेटरी डीएफएस ने मैनेजमेंट के साथ बात की, बहुत सारी चीज़ें हुई और हमने सारा डॉक्यूमेंटेशन कर लिया। तो हमको सेक्रेटरी डीएफएस, फाइनेंस मिनिस्टर, पूरा चैनल इसमें आ गया था, बहुत बड़ा इशू बन चुका था। तो उन्होंने कहा कि यदि अमालगमेशन हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं। तो हमने जो है ये कहा कि अगर अमालगमेशन हो गया है तो वी विल इमीडिएट सरेंडर अवर क्लेम, बट यदि जिसका अमालगमेशन हुआ है तो अमालगमेशन इज ए टेक्निकल एंड लीगल प्रोसेस ऑफ टू एंटिटीज। कि अमालगमेशन होने के लिए जो प्रोसेस है कि जो यूनियन, जिस यूनियन में अमालगमेट होती है वो अपनी जीबीएम बुलाती है, रिजोल्यूशन पास करती है और रिजोल्यूशन पास होने के बाद में जब जीबीएम हो जाती है तो जो एक्सेप्ट करने वाली यूनियन है तो एक्सेप्ट करने वाली यूनियन अपनी जीबीएम बुलाती है, फिर वो उसमें जो है रिजोल्यूशन लेती है कि हम जो है इस यूनियन को अपने अंदर अमालगमेट करते हैं। जब ये दोनों प्रोसेस हो जाते हैं तो ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार के यहाँ वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन सबमिट होता है और उस डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के बाद वो एक अमालगमेशन सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं। तो मैंने कहा कि हमको जो है अमालगमेशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर दीजिए, वी विल सरेंडर अवर क्लेम। मगर नहीं हुआ। जब ये बहुत ज़्यादा ताकत लगी तो कई बार क्या होता है, जब आप अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं ना, शुद्ध मन से, अच्छे भाव से, समर्पण भाव से किसी काम को करने के लिए निकलते हैं तो वो काम जो है ईश्वरीय काम हो जाता है। और जब ईश्वरीय काम हो जाता है तो फिर ईश्वर मदद करने लगता है। तो उन्होंने कहा कि ये क्यों दें, आप ही बताओ कि ये अमालगमेशन इनका नहीं हुआ, आप ही बताइए। लकीली आज हमारा आपका यहाँ मिलन होना था, आप सुनने के लिए बैठे हैं, मैं बोलने के लिए यहाँ पे तत्पर हुआ हूँ। तो उस यूनियन का जो फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी था उसने जो है मंगलोर ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार के यहाँ एक एप्लीकेशन लगा दी कि साहब जो है ये लोग जो है न्यूसेंस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी पर जो कब्जा करे बैठे हैं और जो है अकाउंट्स हैं उनको ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। हमारा अमालगमेशन हो गया है, इस अमालगमेशन के कारण जो है ये सारी प्रॉपर्टी हमें मिलनी चाहिए, इनके अकाउंट में जो भी पैसा है वो भी सब हमको मिलना चाहिए, इसलिए जो है ये न्यूसेंस कर रहे हैं, आप हमको जो है एक अमालगमेशन सर्टिफिकेट दे दीजिए। हम कंसिस्टेंटली उसके टच में थे, रेगुलरली उसके टच में थे। सतीश जी और सुधीन जी लगातार उसमें लगे हुए थे। इन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी, मैं कहा बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद उसको हमने कहा कि भाई इसको जल्दी से करो। तो ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार ने उनको कहा कि आपका अमालगमेशन प्रोसेस हमारे पास अभी आया ही नहीं है, हमारे पास कोई रिजोल्यूशन आपका आया ही नहीं है, आपकी जीबीएम की कोई रिपोर्ट आई ही नहीं है हमारे पास में, इसलिए जो है आप पहले जो है वो सारा प्रोसेस हमारे यहाँ करिए जल्दी से जल्दी, ताकि हम आपको अमालगमेशन सर्टिफिकेट दे सकें। वो दोनों डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गए। उन दोनों डॉक्यूमेंट्स को लेकर के
हम जो है मैनेजमेंट के पास चले गए। मैनेजमेंट उस समय तक भी एडामेंट थी। मैं मैनेजमेंट के दोनों अपने बंधुओं से हाथ जोड़ करके विनती चाहूँगा कि एक टेक्निकल मैटर है, ये कोई आप नहीं सोचें कि आपको मंच पे बिठा करके और हम जो है मतलब ऐसी बातें कह रहे हैं। ये एक प्रोसेस में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको हृदय से पूरा सम्मान करते हुए। एक प्रोसेस है ये मैनेजमेंट के साथ में, तो मतलब मैनेजमेंट के लिए बात कर रहा हूँ, तो आप कोई अदरवाइज नहीं लेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। मैनेजमेंट ने हमको फिर भी इसमें जो है बहुत टालने की कोशिश की, मगर उन्होंने क्या ईमानदारी बरती। जब मेरा डायरेक्ट 15 जून 2021 को अल्टीमेटली हमारी एक मीटिंग हुई, चेयरमैन ने जो है एमडी एंड सीईओ ने जो उसको हेड किया, और टोटल मैनेजमेंट, टोटल टेक्निकल टीम, लॉ ऑफिसर्स, सीजीएम, ईडीएचआर, सारे लोग उसमें बैठे थे। हम भी 5 लोग उस मीटिंग में थे। तो उन्होंने फिर ऑनेस्टी के साथ काम किया। मुंबई की जो टॉप लीगल फर्म है सिरिल, उसको जो हमारा मैटर रेफर कर दिया। और जो जो बातें हमने कही थी वो सिरिल ने जो कि तो एस्टेब्लिश कर दी। उन्होंने कहा कि ये अमालगमेशन नहीं हुआ है, तो विषय फिर लंबा हो जाएगा, तो लंबा ना करके मैं शॉर्ट करता हूं। अल्टीमेटली हमको चेक ऑफ रिवर्सल मिल गया। इसके कारण आज आप जो है सीबीओ का लास्ट कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। तो आज आप यहां पर बैठे हैं तो उसी की कड़ी में आप बैठे हैं। और हमने, मिस्टर राजकिरण राय ने मेरे से कहा कि गिरीश जी, आपकी टेक्निकल उसको देख करके और आपकी कमिटमेंट को देख करके हम भी सब नतमस्तक हो गए। और ये देश के अंदर पहला एग्जाम्पल है कि आफ्टर मर्जर कोई यूनियन आज भी सर्वाइव कर रही है, जबकि मर्जर प्रोसेस पूरा हो चुका है। तो हमने उनसे भी ये निवेदन किया कि हमको आपको ऑकवर्ड पोजीशन में नहीं डालेंगे, चूंकि वो हो चुका है, हम अलग आ चुके हैं, तो आप शायद बने ही हमारे लिए थे। सतीश जी, मुझे लगता है ये कॉरपोरेशन बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन जब आपने कभी आपके एंसेस्टर्स ने बनाई थी, तो ये इसी सोच करके बनाई थी कि एक ना एक दिन ये जो है बीएमएस में जाने वाली है। जबकि क्योंकि हमारी जो मैंने बताया कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो है हमारी जितनी यूनियंस हैं ऑलमोस्ट वो सब ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ही है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो नदियां इधर उधर से थीं, ये सागर में आके मिल गई। तो इस सागर में मिलने के लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और भारतीय मजदूर संघ में आने के बाद आपको जीवन में भी कभी ये मलाल नहीं होगा कि हमने कोई गलत डिसीजन लिया। अभी बात कर रहे थे तो बालिका जी और रविंद्र जी कह रहे थे कि इससे पिछला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था हमारा, वो 3000 लोगों का हुआ था, 3000 का। आज मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, मैं तो बहुत छोटा सा भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता हूं। आज आप वर्किंग एम्प्लॉई हैं, मैं रिटायर्ड एम्प्लॉई हूं, मैं भी पब्लिक सेक्टर से रिटायर हुआ हूं। मेरे में और आप में अगर कोई अंतर है तो केवल इतना अंतर है कि आप वर्किंग और मैं अभी रिटायर्ड हूं। भारतीय मजदूर संघ में पद की कोई वैल्यू नहीं होती है, पद आनी जानी चीज है। तो ठेंगड़ी जी कहते थे कि कार्यकर्ता एक परमानेंट पोस्ट है, बाकी पोस्टें आनी जानी रहती हैं। तो और भारतीय मजदूर संघ ने क्या किया कि 2 टेन्योर से ज्यादा भारतीय मजदूर संघ के शीर्ष नेतृत्व में, चाहे प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट हो, चाहे ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट हो, 2 टर्म से ज्यादा नहीं कंटिन्यू कर सकते, चाहे एज कितनी हो। कोई 50 साल की उम्र में भी अगर 2 टेन्योर पूरा कर जाता है तो रिपीट नहीं करेगा।
तो इसलिए नई जनरेशन को काम करने का मौका मिलता है। तो आज हम ये प्रण लेकर के उठे, यहां से एक रिजोल्यूशन लेते हैं ना, तो हम ये रिजोल्यूशन लेकर के चलें कि आगे आने वाला जो कॉन्फ्रेंस हमारा होगा, ट्राई एनुअल होता हो या बाई एनुअल होता हो, 3000 का जो हमारा रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड को ब्रेक करेंगे। ताली जो है, यदि आप जो है वास्तव में उसे करने के लिए तैयार हैं और ये जो है प्रण लेते हैं, तो ताली फिर जोर से बढ़ा। भारत माता की। तो अगला कॉन्फ्रेंस पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ करके बनेगा। आपके पास स्वाभाविक रूप से आज के बाद से आप भारतीय मजदूर संघ के, आज के बाद से नहीं, जिस समय से एफिलिएशन आपने लिया उस समय से आप भारतीय मजदूर संघ के सिपाही हो गए। भारतीय मजदूर संघ किसी तरह से अपने पुराने और नए कार्यकर्ता के अंदर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। और मैं कल आपकी सीसी के अंदर बोल रहा था कि सुधीन जी और सतीश जी, इनमें पोटेंशियल बहुत है, इनमें नॉलेज बहुत है, इनमें डेडिकेशन बहुत है। ये भारतीय मजदूर संघ में भी हमारे जो सेंट्रल फेडरेशंस हैं उसमें अच्छी भूमिका निभाएंगे, ये मैं अपेक्षा करता हूं। और आपको इन पर गर्व होगा। और जो भी सेकंड लाइन के लोग हैं वो अपने आप को तैयार करिए। पूरा देश कम्युनिस्टों के चाल चरित्र और चेहरे को बहुत भली भांति पहचान चुका है। जो आंदोलन के लिए ही बने थे, जो आंदोलन जीवी कहलाते थे, वो आज हाशिए पर चले गए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि आने वाले समय में हो सकता है कि जो भी आप नाम चेंज करेंगे, जो रिजोल्यूशन लेंगे, ये अभी आगे आप करने वाले हैं, वो जो आपका नॉमिनेचर होगा वही नॉमिनेचर केवल यूनियन बैंक में बचे। क्योंकि बेईमानी की हद होती है। ये यूनियन जो फेडरेशन के नाम से जानी जाती है, ये 64 में रजिस्टर्ड हुई थी मुंबई में। अभी जो ये चल रही है ये मार्च 21 के रजिस्ट्रेशन पर चल रही है। और मार्च 21 के पहले का क्या रिकॉर्ड है किसी को पता नहीं है। जबकि मेजॉरिटी यूनियन थी, तब से ही चेक ऑफ के थ्रू करोड़ों नहीं 100 करोड़ रुपया अकाउंट में आया है। 21 से पहले का कहां पैसा गया कुछ को किसी को पता नहीं है। वो चैलेंजेबल मैटर है, तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं। हम बहुत सरल हैं, हम बहुत सौम्य हैं, हम बहुत संस्कारी हैं। तो कल भी मेरे मुंह से निकल गया था कि संस्कारी हम, सौम्य और संस्कारी के लिए हैं। मगर हमारे सामने शैतान खड़ा है, तो हर व्यक्ति के अंदर साधु और शैतान दोनों होते हैं। जब साधु के साथ बात करो तो साधु बन जाओ, और शैतान के साथ बात करो तो अपने भी शैतान को जगा दो। ऐसे काम नहीं चलेगा। अब मैं कंक्लूड करने की तरफ बढ़ता हूं। भारतीय मजदूर संघ का मैंने बताया कि हम रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन काम करते हैं। हम अपॉलिटिकल जो है ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये प्रूव कैसे हो? आजकल जो टाइम है वो तो प्रूव का है ना। प्रूव करिए। अगर आप स्टेटमेंट कर दे रहे हैं कोई कि 2 and 2 is 4, तो आप प्रूव करिए उसको। भारतीय मजदूर संघ 93 में एक एजिटेशन किया। उस समय WTO का बहुत चल रहा था, डंकल प्रस्ताव था। उससे जो है पूरे विश्व की इंडस्ट्रीज जो है ओहापोह में पड़ गई थी। तो भारतीय मजदूर संघ ने उसके खिलाफ एजिटेशन किया, लाखों की संख्या में एजिटेशन किया। उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी। क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन पर मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता,
प्राइवेटेशन में जो है ये जो गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है इसका अकेली का रोल नहीं है। ये जो है एक प्राइवेटेशन की, डिसइन्वेस्टमेंट की, मर्जर की, ये एक जर्नी है। और जर्नी ये जो है 2014 से स्टार्ट नहीं हुई है, 2014 से स्टार्ट नहीं हुई है। ये जर्नी जो है स्टार्ट हो गई थी 70s में, और 91 में जब एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद में इसने स्पीड पकड़ ली। तो उसमें जो है ये सभी देश की जो बैंकिंग है, देश का जो पब्लिक सेक्टर है, जो देश की बैकबोन है, उसको तोड़ने का सभी प्रयास कर रहे हैं। तो जब जब इस पर अटैक हुआ है तो भारतीय मजदूर संघ ने सामने आकर के उसका विरोध किया है। तो 16 अप्रैल 2001 को लाल किले पर हमने एक रैली की। उस रैली में WTO तोड़ो मोड़ो छोड़ो, वर्ल्ड ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ो मोड़ो छोड़ो का नारा दिया। और उस समय यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर थे, अटल जी प्रधानमंत्री थे। तो ये ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो थ्रेशोल्ड होता है इंडस्ट्री का, वो 100 एम्प्लॉयज था। तो उन्होंने अपने बजट स्पीच में अनाउंस कर दिया कि ये 100 की जो थ्रेशोल्ड है इसको हम बढ़ा करके 300 करते हैं। इसका मतलब क्या है कि 100 एम्प्लॉयज तक पहले क्या था, 100 एम्प्लॉयज तक हैं तो उनकी फैक्ट्री को बंद करने के लिए गवर्नमेंट से एक बहुत लंबा प्रोसेस करके क्लोजर के लिए परमिशन लेनी होती थी। तो उन्होंने बढ़ा करके 300 कर दिया। तो श्रद्धेय ठेंगड़ी जी ने उसमें कहा था कि यशवंत सिन्हा इज ए क्रिमिनल मिनिस्टर, ही हैज एनक्रोच्ड द पावर्स ऑफ लेबर मिनिस्टर, सो ही शुड बी स्टेप डाउन, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू अवर एजिटेशन। और अटल जी के सामने बहुत दुविधा खड़ी हो गई थी कि अगर ठेंगड़ी जी ने बोला है भारतीय मजदूर संघ अगर पूरे देश के अंदर तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया तो तुम्हारे सामने बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी, और यदि इनके कहने से मैं फाइनेंस मिनिस्टर को ड्रॉप करता हूं तो मेरी पोजीशन खराब हो जाएगी। अल्टीमेटली यशवंत सिन्हा को ड्रॉप करना पड़ा था। इसको क्या बोलते हैं? रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन। जब सरकार को हमारी जरूरत होती है, अभी 44 लेबर लॉज को 4 लेबर कोड्स में कन्वर्ट किया, बाकी ट्रेड यूनियंस विरोध करती रहीं। भारतीय मजदूर संघ ने उसका जो है, जैसे ही कोड ऑन वेजेज आया, जैसे ही सोशल सिक्योरिटी कोड आया, भारतीय मजदूर संघ ने सबसे पहले आकर के उसका समर्थन किया। मगर IR कोड और OSH कोड में कुछ प्रावधान गलत थे, उसका विरोध किया। तो भारतीय मजदूर संघ प्योरली वर्कर्स के लिए, वर्कर्स के द्वारा और वर्कर्स के लिए ही काम करता है। इसके आगे हमारी कोई सोच नहीं है। हमारी कोई न जाति है, न कोई धर्म है, न संप्रदाय है, न क्षेत्र है। जब हम भारतीय मजदूर संघ के सिपाही बन करके निकलते हैं और अपने घर से निकलते हैं तो हम ये सोच करके निकलते हैं कि हमारी एक ही जाति है, मजदूर, वर्कर। इसके अलावा हम कुछ नहीं सोचते। हमारे साथ क्रिश्चियन भी काम करते हैं, हमारे साथ मोहम्मडन्स भी काम करते हैं, हमारे साथ बौद्ध भी काम करते हैं, सिख भी काम करते हैं, सब मिलकर के काम करते हैं। भारतीय मजदूर संघ के लिए कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए सभी लोग बड़े मन से काम करते हैं। अभी मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपके सामने भी एक बात कह करके जाता हूं कि अभी बैंक्स पर और पब्लिक सेक्टर्स पर खतरा है। बाकी ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस अपनी जिम्मेदारी से विमुख होकर के साइड में चले गए हैं। तो भारतीय मजदूर संघ ने सोचा कि भाई सारे ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठा करना हमारे बस की नहीं है, वो हमारे साथ आ भी नहीं सकते। तो हम क्या करें कि एक बैंक का जो है प्राइवेटाइजेशन का है तो वही बैंक लड़ती रहेगी। तो हमने जितने भी भारतीय मजदूर संघ के पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड फेडरेशन हैं,
इंडस्ट्रीज हैं, उनको सबको इकट्ठा किया। उसमें बैंक है, इंश्योरेंस है, स्टील है, कोल है, नॉन कोल है, रेलवे है, पोस्टल है, डिफेंस है, और जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावर ग्रिड, बीएचईएल, एचएएल, ऐसे जो 330 जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, इनका सब के मिला करके एक जो है पब्लिक सेक्टर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। और वो पब्लिक सेक्टर कोऑर्डिनेशन कमेटी निरंतर एजिटेशंस कर रही है। अभी 28 अक्टूबर को अराउंड द कंट्री हमारे 6000 कार्यक्रम हुए। अभी हमने सोचा कि अब क्या करेंगे, तो 17 नवंबर 2022 को हमने ऐलान कर दिया है कि सरकार ने नीतियों पर पुनर्विचार नहीं किया, स्टेक होल्डर के साथ बैठ करके वार्तालाप नहीं किया। हम मानते हैं कि पैंडेमिक में इस सरकार ने क्या किया है, कितने पुअर्स को जो है, कितने गरीबों को इसने सेवा की है, किस तरह से राशन बांटा है, किस तरह से उनकी समस्याओं को एड्रेस किया है, किस तरह से उनके खातों में पैसा पहुंचाया है। हम इन सभी गरीब गुरबाओं के लिए सरकार इसके काम की इस मंच के माध्यम से भी मैं सराहना करता हूं और उनको साधुवाद देता हूं। मगर मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, कोई काम बिना पैसे के नहीं हो सकता। सरकार को पैसे की आवश्यकता है, तो सरकार को पैसे की आवश्यकता है, हम मना नहीं करते। और हमारा जो सेक्टर है ये, जिसके लिए हम एजिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस सेक्टर के पास पैसा है। तो हमने सरकार को ये सजेशन भेजा है, ऑल्टरनेट भेजा है। हम केवल समस्या उठाते नहीं हैं, हम केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करते हैं। तो भारतीय मजदूर संघ की एक नीति और भी है, संघर्ष और संवाद। संघर्ष भी करेंगे और सरकार वार्ता के लिए आगे आएगी तो वार्ता करके उसका निपटारा भी करेंगे, क्योंकि हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि बिना वार्तालाप के कुछ होता नहीं है। अभी बहन कह रही थी, इन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में बोला था कि ये एक जेन्युइन ट्रेड यूनियन है। भारतीय मजदूर संघ इज ए जेन्युइन ट्रेड यूनियन। जेन्युइन ट्रेड यूनियन क्या होती है? कार्ल मार्क्स ने कहा था कि यदि संपूर्ण कम्युनिस्ट क्रांति लानी है तो जेन्युइन ट्रेड यूनियन को डेवलप मत होने देना, क्योंकि हमारा मकसद यूनियन करना नहीं है, हमको पूरे विश्व में जो है कम्युनिज्म का प्रचार करना है। इसलिए यदि जो है, क्योंकि और कम्युनिज्म कौन ला सकता है, इंकलाब, संपूर्ण क्रांति कौन ला सकता है? भूखा मजदूर। जब तक उसके कनस्तर में, उसके घर में आटा रहेगा, वो क्रांति के लिए मरने को तैयार नहीं होगा। और ये जेन्युइन ट्रेड यूनियन क्या करती है कि आपने 100 रुपीज की डिमांड की, सामने से जो है 50 का ऑफर आया, तो 50 के बाद में जेन्युइन ट्रेड यूनियन नेगोशिएट करना शुरू करती है और कहीं 60, 65, 61, 58 पर जाकर के समझौता कर लेती है। मगर कम्युनिस्ट यदि 100 की डिमांड की है, 50 पे वो आ गए और 90 पे भी चला जाए सामने वाला पक्ष, तो उनकी डिमांड 100 से 150 पे चली जाती है, क्योंकि उनको मामला सेटल नहीं करना। तो इसलिए जेन्युइन ट्रेड यूनियन में और कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियन में यही अंतर है। तो भारतीय मजदूर संघ जे जेन्युइन ट्रेड यूनियन। तो अभी 17 नवंबर 2022 को, 17 नवंबर 2022 को भारतीय मजदूर संघ का इसी सेक्टर को मिलाकर के कम से कम 1 लाख कर्मचारियों के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाना है। मैं आज ही से आपको आह्वान करके जाता हूं कि जितने मैक्सिमम आप उसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। हर सेक्टर को नंबर दे दिया गया है। और भारतीय मजदूर संघ में ऐसा नहीं होता कि जो है तालाब में दूध डालने जाना है भरने के लिए, तो देखा रात को दूध डालना है, कौन देखेगा, अरे अपना पानी डाल दे, विश्वनाथ जी के दूध में मेरा पानी मिल जाएगा तो वो भी सफेद हो जाएगा। नहीं, जिस बैंक से
जिस इंडस्ट्री से जितनी लिस्ट बताई जाएगी, हमको उनके नाम चाहिए और नाम के साथ उनका मोबाइल नंबर चाहिए कि ये लोग जो है दिल्ली पहुंचेंगे। उसमें 10% ऐसा हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए, ए की बजाय बी चला जाए और बी की जगह सी चला जाए, मगर हम इंश्योर करेंगे कि 1 लाख लोगों की वहाँ पर क्वालिटी रिप्रेजेंटेशन हो और वहाँ पर जाकर के सरकार को हम कहें। उसके बीच में वार्तालाप होती रहेंगी, वो अलग बात है। तो हम भारतीय मजदूर संघ के सिपाही हैं। आप बहुत ध्यान से मुझे सुना है और आपके जो 22वां ये अधिवेशन है ये पूर्णतया सफल होने ही वाला है, इसमें फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। और मैं भारतीय मजदूर संघ की तरफ से केवल आपको आश्वस्त करने आया हूं कि आप एक बड़े अम्ब्रेला के, ये केवल देश का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। भारतीय मजदूर संघ केवल देश का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, भारतीय मजदूर संघ विश्व का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है। रीजन बीइंग कि चाइना को आप सबसे बड़ा कह सकते हैं, मगर चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना में जो चाइना गवर्नमेंट की यूनियन है उसके अलावा कोई और यूनियन नहीं है, इसलिए हम उसको यूनियन की कैटेगरी में काउंट नहीं करते। जो उसका सेक्रेटरी जनरल होता है उसके पास MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट का स्टेटस होता है और वो बड़ी सैलरी लेता है। तो इसलिए दुनिया में, तो अभी एक बात खत्म करते हुए अपनी बात को मैं विराम दूंगा कि जब ठेंगड़ी जी ने ये देख लिया कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म दोनों फेल हो चुके हैं, कम्युनिज्म धाराशायी हो चुका, कैपिटलिज्म, क्योंकि इस खुले समाज में शोषण व्यवस्था चल नहीं सकती। कैपिटलिज्म क्या चाहता है कि उसका वर्चस्व रहे और कम्युनिज्म क्या चाहता है, उसका मतलब मजदूर मजबूत है तो वो उसका गला दबा दे मालिक का, और मालिक का अगर जो है मजबूत है तो मजदूर का गला दबा दे। तो हमने क्या कहा कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट फेल हो चुका है कि केवल और केवल 2 पक्ष नहीं है, तीसरा पक्ष नेशन है, कस्टमर है। अगर आप नेगोशिएशन कर रहे हैं मैनेजमेंट के साथ में तो जो प्रोडक्ट आप बना करके दे रहे हैं वो प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा, और मार्केट में जाएगा और आपने अपना हिस्सा लिया, उसकी कीमत बहुत बढ़ा दी तो उसका लोड सारा का सारा कस्टमर पर जाएगा। तो कस्टमर कौन है? राष्ट्र है। तो इसलिए जब नेगोशिएशन करें तो थर्ड जो आपका जो पार्टनर है, कस्टमर है, उसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, तभी आप नेगोशिएशन करेंगे। तो इसलिए भारतीय मजदूर संघ एक डिफरेंट तरीके से चला। तो हमको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, हमारा लगता है कि आगे रास्ता नहीं है, तो हम श्रद्धेय ठेंगड़ी जी का कोई साहित्य निकाल करके पढ़ लेते हैं, जो उनके भाषण हैं उनका संकलन निकाल करके सुन लेते हैं। तो अभी भारतीय मजदूर संघ केवल ट्रेड यूनियन नहीं करता है, पेंडेमिक में हमने सब काम बंद कर दिए, पूरा ट्रेड यूनियन बंद कर दिया, और पेंडेमिक में हमने सारे हमारे कार्यकर्ता मैदान में उतर गए, किसी को राशन पहुंचाना, किसी को कुछ करना। और मैं बड़े दुख के साथ इस बात को कहता हूं कि 347 हमारे ऐसे कार्यकर्ता जो बहुत सिद्ध कार्यकर्ता थे लोगों को बचाने में, वो इफेक्टेड हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। उस समय हमने ये नहीं देखा, राष्ट्र पर संकट था तो हमने ट्रेड यूनियन को बंद कर दिया और जनता की सेवा में निकल गए। ये भारतीय मजदूर संघ है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारा एक रिसर्च सेंटर है, भारतीय मजदूर संघ का एक रिसर्च सेंटर है, जो श्रद्धेय ठेंगड़ी जी हमको दिशा दे करके गए हैं, उनका जो हमारे पास साहित्य है। तो अभी जब जो है कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म दोनों फेल हो गए, तो व्हाट शुड बी द थर्ड वे टू मूव अहेड? पूरी दुनिया को राह दिखानी है हमको। तो ILO ने हमारी बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया है, अपने एजेंडे में लिया है। तो ILO भी हमारी तरफ देख रहा है। तो अभी श्रद्धेय ठेंगड़ी जी के जो विचार हैं उनको डिकोड करने के लिए हमने जो है 12 स्कॉलर्स लगाए हुए हैं। वो स्कॉलर्स उनकी स्टडी करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और सारा काम करते हैं। तो भारतीय मजदूर संघ केवल, तो एक हमारा गीत है, भारतीय मजदूर संघ अब सबको राह दिखाएगा, जाग उठा इंसान देश का, परिवर्तन अब आएगा। तो हम
पूरी दुनिया की उहापोह में न रहे, तो भारतीय मजदूर संघ आर्थिक क्षेत्र में पूरी दुनिया को थर्ड वे के रूप में आगे लेकर के जाएगा। मैं आपको बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे लगता है कि थोड़ा समय मैंने ज़्यादा ले लिया है, बात करने को मन बहुत करता है, बोलते रहेंगे तो बोलते रहेंगे, मगर समय की मर्यादा है। मैं हृदय से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय मजदूर संघ के सभी को परिवार का सदस्य बनने के लिए बधाई देता हूं। आप एक ट्रेड यूनियन का काम नहीं कर रहे, जब भारतीय मजदूर संघ में आ गए हैं तो आप राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं। हम लोग बॉर्डर पर जाकर के देश की रक्षा करने के लिए बंदूक तो नहीं चला सकते, मगर यहाँ रह करके मेरी लास्ट अपील आपसे, विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके निवेदन है मेरा आपसे कि बैंक ने हमको जो रिक्रूट किया था, इस देश के ग्राहकों को, कस्टमर्स को, अकाउंट होल्डर्स को, गरीब की जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी आपको टास्क दिया गया है, मैं ट्रेड यूनियन का प्रतिनिधि हूं, उसके बावजूद भी आपसे कहता हूं, पहले बैंक का काम, बाद में यूनियन का काम। बैंक सरवाइव करेगा, बैंक कंपीट करेगा तो हमारा सब कुछ चलता रहेगा। बैंक बंद हो जाएगा तो ना यूनियन रहेगी ना हम रहेंगे। तो इसलिए बैंक हमारी मां है, बैंक हमारी मां है, वो हमारा पालन पोषण करती है। तो बैंक के अस्तित्व पर कोई भी ताकत आकर के चोट करने की कोशिश करती है तो पूरी ताकत के साथ उस ताकत को तोड़ देना है, बैंक को बचाना है। मैनेजमेंट में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो निजी स्वार्थ के लिए काम करते हैं, हमको उनके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन भी रखना है। और मां, उसका एक स्वभाव होता है, मां का स्वभाव होता है कि वो कभी अपनी ट्रांसफर उठा करके आउटस्कर्ट वेस्ट बंगाल में कर दिया जाता है और फिर उसके पास खबर जाती है कि अगर तुम वापस आ जाओ तो हम 2 दिन के अंदर आपको रिटेन करा देंगे। तो आज ही उसका ट्रांसफर कैसे हो गया, और फिर जो है यदि वो वापस चला जाता है तो ट्रांसफर रिटेन कैसे हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट उनकी इंस्ट्रक्शंस पे काम करती है। मेरे को इस बात का बहुत दुख है और मैं कई एमडीज के साथ में इस बात को शेयर कर चुका हूं, मगर संकट नहीं हो, कठिनाई नहीं हो तो लड़ने में भी क्या आनंद है। हम इन सभी चैलेंजों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे और मैनेजमेंट और आईबॉक का जो गठबंधन है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे भी लोग हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, मगर वो बेचारे दबाव में काम कर रहे हैं। तो दबाव हम तोड़ने वाले हैं। जब दबाव टूट जाएगा तो मैनेजमेंट भी फ्रीली काम करेगी। मैनेजमेंट को किसी से कोई लेना देना नहीं होता, मगर एक प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर के कारण होता है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, भारतीय मजदूर संघ एक सशक्त ऑर्गेनाइजेशन है, एक बड़ा अम्ब्रेला है, और आपको मैं यही आश्वासन के साथ कि अगला अधिवेशन हमारा जो है बहुत बड़ा होगा, बहुत अच्छा होगा, आप यशस्वी होंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज यहीं विराम देता हूं। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ 2-3 नारे लगाएंगे जोरदार। मैं बोलूंगा बीएमएस की क्या पहचान, आप बोलेंगे त्याग, तपस्या और बलिदान। बीएमएस की क्या पहचान मैं बोलूंगा, आप बोलेंगे त्याग, तपस्या और बलिदान। बीएमएस की क्या पहचान, बीएमएस की क्या पहचान। एक नारा, देश के हित में करेंगे काम। मैं बोलूंगा देश के हित में करेंगे काम, और आप बोलेंगे काम के लेंगे पूरे दाम। देश के हित में करेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you, sir. You have thrown light on a relevant issue of far-reaching consequences. Our General Manager Sri Ratish is a person who believes work is worship. He never minces words when he has to call a spade a spade. We are eager to listen to you, sir. A warm good morning to all of you, ladies and gentlemen. President Sri Sudhindra, General Secretary Sri Shetty, All India Secretary BMS Girish Chandra Arya ji, BMS General Secretary Sri Vishnath, NOBO General Secretary Sri Veeraj, Reception Committee Secretary Brajesh Kumar Singh, my dear friends एकनाथ बालिगा जी, रघुरामन जी एंड बहुत सारे मेरे साथियों, आप सबका मेरा नमस्कार. It gives me great pleasure to stand before you today morning when Corporation Bank Officers Organization is conducting the 22nd General Conference of the Officers Organization. My association with CBOO has been quite old, and the name itself suggests Corporation Bank is the basis of Corporation Bank Officers Organization. So, when you look at the Corporation Bank Officers Organization, the contributions made by Corporation Bank Officers Organizations over the years, I am sure many youngsters who have joined the bank recently may not be knowing the sacrifices made by the earlier office bearers, the earlier, right from Balasubramaniam ji, the contributions made by the earlier office bearers, the soldiers on the field of CBOO who have taken this organization to such greater heights that whenever the bank faced serious crisis, Corporation Bank Officers Organization has been in the forefront to suggest certain remedies, to take the bank forward, joining hands with the management. Many steps have been taken, and these are all part of history. So, the corporation, when you look at Corporation Bank, it was a very long journey of 114 years, starting from 1906 and culminating in 2020 with the decision of the central government to go for amalgamation. Over the years, we had many visionary leaders as the chairman and managing director of the bank, and many new steps were taken during all these periods. Many path-breaking decisions were taken, many new products were developed and launched by the bank over the years, which made Corporation Bank the #1 bank in the country as far as many of the products and the services were concerned. Notwithstanding the small size, Corporation Bank was reckoned as a force within the banking industry. I do not know how many of you recollect. The bank went for initial public offer during 96-97, and it was a stupendous success. The public offer was subscribed many times over, and the shares of the bank of 10 rupees face value opened at 90 rupees, and then it went up to 150 rupees, and it was a strong symbol of what the bank stands for. To tell you frankly, during those times when I had the opportunity to work in Bombay during 93-94, the trademark of Corporation Bank was so costly that many of our colleagues
were absorbed by the new banks which were set up at that point of time, ICICI Bank, HDFC Bank. Many of our colleagues left this bank and joined there. The only tag is required is Corporation Bank. They were getting free pass everywhere. Many of them joined all those banks and they have remained with those banks and they have progressed well. Those banks have also come up nicely. If you look back, the contribution made by such officers from Corporation Bank, be it in an Indian bank or like other foreign banks like Bank of New York, etc., where my friends have gone and they have made stupendous contributions. So that was the history of Corporation Bank, the history of Corporation Bank Officers Organization, the struggles conducted by CBOO. I do not know how many of you are aware of it. The seniors may be quite aware of it. The staff benefits which you are all enjoying, and post-amalgamation it was best of the three. These were all because of the contributions made by the struggles and contribution. Nobody gives you just like that. These benefits were clinched by the unflinching commitment of the CBOO and the sponsors. Everything was manual. Then there was something called balancing. It was all a manual process. From that stage, we have come to totally automated digital systems. The bank has passed through various installments of automation. First it was TBA, then you went in for IBAS, we had the iLink, and then we migrated to Finacle, the core banking solution. Somewhere it started in 2015, and the pains were too much. The pains of migration, the changeover which has been taking place, it has been quite stupendous, and all these things the bank could go through because of the support and the contribution given by each and every one of you sitting over here, who are not here. The officers toiling day in and day out during these changes, facing the wrath of customers. When the system is not working, system is down, you don't get connectivity, server is down, the officers sitting at the branch level facing customers had to carry this forward. And notwithstanding all these things, the bank came out successfully, migrated to Finacle 10. The migration was not so easy, it was quite painful. The customer growth, then came something called PCA. Somewhere in 2015, the bank was for 2-3 years under prompt corrective action due to various reasons, n number of reasons. The new guidelines which came inside, the type of accounts which were there at that point of time, the type of NPA growth which has taken place, it was under PCA. But again, I would say, the unflinching commitment of the officers sitting over here who are not here, in taking this bank outside PCA, we came out of PCA successfully, and Corporation Bank was one of the first banks which came out of PCA successfully during that period. So I take this opportunity to thank each and every one of you who have toiled during this period and taken the banks to glory. Now, I recollect various instances when the bank's identity was at crisis. There were certain serious issues, and the contribution made by the Corporation Bank Officers Organization in facing these crisis situations, taking this bank forward. Various instances when even the management has taken recognition of the suggestions made by CBOO in taking the bank forward. It was a win-win situation for both the management as well as the union, because without the bank there is no union. So we have crossed all those stages and came to a point in 2019, August or September, there was a declaration or a statement made by the finance minister that a decision has been taken to amalgamate many banks, 10 or 11 banks into 3 banks. So Corporation Bank was one out of that, and the anchor bank was Union Bank of India, and another bank also with more than 100 years of existence, Andhra Bank. The 3 banks were amalgamated together into the anchor bank and Union Bank of India to form a very large entity, amalgamated entity, which in terms of assets and liabilities
were the fifth largest bank in the country. The amalgamation also was not so easy. Again, the support given by the officers, the pain was felt at various points during the amalgamation process. The customer complaints, the issues, the system integration. See, there were three things which happened simultaneously during 2020 when first it was the amalgamation which came into effect from 1st of April 2020. Simultaneously, Corona came inside. Then came this serious integration. I recollect, I joined Union Bank of India Central Office in May 2020, prior to which I was in SAMV vertical of Corporation Bank. I joined Union Bank of India and straight I was posted to Operations Department. The Operations Department is something which takes care of the entire thing other than credit, legal and IT. बाकी सब कुछ Operations Department के अंदर आता है. And the kind of struggle which we had there, I had something like 150 officers in the department, but during the Corona time, the number of people attending office was hardly 20, and out of which those who could do something was less than 10. During those period, with that challenges, we could take the struggle, we could do it only because of the commitment of people like you, who have been at the forefront of the issues, facing customer challenges and taking the bank to greater heights. I would recollect with gratitude that out of the DGMs and AGMs who were there in operations department, 90% of them were from Corporation Bank. In fact, the entire load has been taken by them, and we had a unit in Mangalore also. Mr. Tyagi is very much over here. The Mangalore department, the portion of the department also made huge contributions, because there were a lot of compliances pending to be done and given to Reserve Bank of India as part of the amalgamation, be it CKYC, re-KYC, anything. There were a lot of things to be complied with during the amalgamation process. I am happy to tell you that most of these things have been successfully implemented, and we are now in a better stage. The bank is now moving towards digital. Most of you are aware, the youngsters, please keep in mind, the future belongs to digital. The bank has taken various initiatives in operations department, in IT department. Now, most of the things are going digital. We have many apps which have been launched. All of you are aware of U-Mobile. Most of the transactions can be done through U-Mobile by a customer without visiting the office. The application protocol interface based banking is there. Machine learning, artificial intelligence, these are all playing a greater role in the days to come. And digital banking will decide the future of the bank, and those who are digital will succeed. Those who are slow to adopt digital, those banks will not be there. The integration of the bank has been completed. We are in a better stage today. Most of the processes have been harmonized. Staff have been harmonized. The branches have been harmonized. So the strength of amalgamation is bound to show results in the days to come forward. So the officers, each and every one of the officers will reap the benefits of amalgamation in the days ahead, provided you all remain awake and realistic situations are there in your mind. See, there has been a statement made by the FM that going forward there will be only 4 banks. I need not tell you what is the meaning of this. Union Bank of India is in 5th position now. Taking all these benefits, the initiatives taken, we should climb up and grow to a level so that when a decision is taken to amalgamate the remaining banks and retain only 4 banks, Union Bank will remain. Union Bank should remain. Even today, you have corporation below the Union Bank's logo. The strength of corporation Andhra is reflecting on Union Bank of India today. It is the strength given by officers like you. So, my dear brothers and sisters,
the seniors who have come up, we don't have much service left, but then again, the youngsters sitting over here, you have a bounden duty to safeguard the interest of the bank, because as Aryaji was telling, if the bank is there, the officers are there. If the officers are there, officers' organization is there. So with this, I conclude, wish you all the best, wish you fruitful discussions during the business session of this conference. Let the bank flourish. Please identify yourself with the needs of the customer, resolve their issues, and try to bring in more and more customers so that Union Bank flourishes, and we will stride greater heights in the days to come. Wish you success and wish you all the best. Thank you very much. Thank you, sir, for the information on present banking, especially on our bank. One of our guests of honor, Sri Ravindra Babu, Field General Manager, is in Udupi to pay respect to our founder by visiting Founders Branch. He may join us later. Now we request the General Secretary, BMS Karnataka, Sri H.L. Vishwanath, to address the gathering. Namaskaram to all. Respected President and Secretary of our CBOO, Sudhindra Sir and Satish Shetty, and by a flex of age is retired, but young and energetic, dynamic leader of our All India Secretary, Sri Girish Chandra Aryaji, is profession by engineering and also is very good engineering in labor movement. And he is expert in human relations and public relations of the labor unions with the management and government officials. And also all our financial representatives of the BMS, NBWO, General Secretary, Viraj Tikarji, and all the dignitaries and all the brothers and sisters. I'm not much more time, just only take a few minutes. All the subjects covered by our senior Girish Chandra Aryaji. But I'm also thanks to give me an opportunity to attend this convention. Firstly, I welcomed all the delegates to the Karnataka state on behalf of Bharatiya Madhu Sangha. And I am also heartily welcome to all the CBOO members, because you are all associated with the other ideology. I heartily welcome to our patriotic and nationalistic movement, Bharatiya Madhu Sangh Parivar. Because I am also associated with the BMS in last 12 years, proudly said I am one of the member of the Bharatiya Madhu Sangha, because it's a nationalistic and patriotic movement of the nation. I said the use, it is not a Sangha union, it is a patriotic movement. Because Tengdiji has formed the union, because all our workers, members are work for their livelihood, but work for the nation. This is the motto. Our work is for development of the nation. Because any Mazdoor, even construction labor, work for their livelihood, for Mazuri, Kuli. But they build the roads, build the bridges and build the industries. That is the development of the nation. Because BMS said that we give the proud to the workers, they work for the nation. This is the motto. For this reason, the BMS is work
along with the labor's motto of this one. Second thing, we also already Girishara said that we positively and constructive support to the entity to develop and achieve the goals of the entity. Because we are together with the part and parcel of our entity, then only we have to get an. For that reason, I am also once again said that thanks for giving opportunity, and I wish to all the convention will be success. And I am also once again wish and give the one word. The Girishara Chandra said that in next convention will be the grand success, more than 3,000 delegates. And why I am again said this word, and your General Secretary and President is very active, but your hands along with them, both of them, then only the what we wish that should be success. Because our union should be strengthened, our membership should be increased, not only with the President General Secretary, but you are also all the office bearers and all the members, you work together with the your President General Secretary, and you should support of them and increase your membership, then we show the strength. Then only our union activity will be strengthened. For that reason, I wish that your all hands work together for your union activity, and you increase your membership and strengthen your members and you strengthen your organization, then only we will get all the success in our demands. Then once again, I will not take much more time. Thanks for all, and thanks for giving opportunity. Thank you, sir, for your kind words. We have with us our beloved General Secretary of NOBO, Shri Viraj Tikekar, who will greet CBOO and its members on this memorable day. Hello. Good morning. Honorable President, CBOO and all other dignitaries on dais, and my beloved brothers and sisters. Henceforth, as Aryaji has rightly pointed out, we have come out of the clutches of comrades and we will be behaving as brothers and sisters only, which is the future of India, which is future of Union Bank of India. Today, before my talk, I am having the two big canvas led by, one by Girish ji for BMS and other canvas led by Ratish ji for Corporation Bank's rich history and its grand future. So now as a banker representative of BMS and representative of officers in UFBU before IBA, we always try to maintain our different status, different ideology, which is suiting our members, because BMS works for members, not for membership. As we have seen at many places, many unions, they are eager to capture the number. Even now also, after your switch over from Corporation Bank to Union Bank and switch over of CBOO to whichever name you will be choosing in your business discussions, with Union Bank in your name. So for that purpose, our ideology should be clear. As rightly put by Aryaji, nation first, industry next and individual last.
is the ideology given by Bharatiya Mazdoor Sangh. When you have decided now to opt for this good option, which thinks of the third way, which thinks of nation, so we are all sure that our future is going to be very, very positive and bright. So you will resolve from here, while going from here, you will have the resolutions that not only you have to change Union Bank, but you have to change the nation, the society around you. That is the obligation we would like you to carry as BMS constituent. As a national representative of officers in UFBU, of course you are aware, in last settlement we could clinch some good deal along with a PLI component which was enforced by government. They said whatever you have, we are ready to discuss, but some part at least should be included as PLI. You must have also enjoyed that PLI component. And now again, this is 2022, so our settlement date is coming again to an end. Our 8th joint note will finish on 31st of October. Therefore, you are aware now UFBU has again given one communication for clearing of old issues. In those old issues, old pending issues, you are aware 5 days banking is the most loving topic which officers, as officers we are very close to that, and that is our demand from NOBO also and from BMS also. With our added strength, we will be pursuing that matter for its positive resolution. But within ourselves, we should be aware that within UFBU also, we could not get that concrete support from our award staff constituents. I can openly share it in this forum. We must be aware as officers that when we are very much eager for 5-day week, our half of our share in UFBU, they are not so eager to clinch that deal. That may be one of the reasons why we could not clinch it earlier. But as you are aware, other than that other retirees options, most important pending issue is related to 5-day week. And we will be going to IBA. We have asked them for convening the meeting. You are aware, IBA is also getting reshuffled. Earlier IBA chairman, you are aware, Rajkiran Rai ji has now stepped down as IBA chairman. He may be leaving your bank also very soon. And another IBA chairman has come there from UCO Bank. And because of these administrative changes, now also again EDs and MDs, again interviews may be there. Again some reshuffle is likely. And thereafter, with new constituted IBA, they may call UFBU, and we will be putting our views there strongly. In the meanwhile, this transition, we are happy. Today here, we are participating in CBOO's 22nd All India Conference, which may be the conclusion of CBOO. But आपके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा कि आज जब आपका CBOO का सूरज डूबेगा तो कल आप यूनियन बैंक के सूरज के साथ और बड़े हो जाएंगे, और आपका स्पेक्ट्रम जो पहले CBOO में 7-8 हज़ार तक सीमित था, नाउ विथ यूनियन बैंक एम्ब्लेम विथ यू, your limit is increased up to 40,000, 45,000, 50,000. So we see that your potential of your talent will be best utilized in Union Bank to change their orientation
and the right decision taken by your body executive committee to switch over to the honest persons, as rightly put by Aryaji. Now you are with honest people. Because you yourself are honest, you felt like switching over to honesty more and more. So we will carry the flag very honestly. ये जो हमारी बंद मुट्ठी का जो BMS की जो पहचान है, ये बंद मुट्ठी हम और ताकतवर करते जाएंगे. Because till now, maybe because of some vested interests in banking industry, communists have been dominating. You are well aware, you are all the seasoned bankers. But now with our reinforced BMS team, we are getting the deals cleared even from the Department of Financial Services, and managements also are now keen to talk to us, and we will be ensuring, as a Federation General Secretary, I would like to tell here before you unambiguously that the issues like recognition of Bharatiya Mazdoor Sangh representative, even in banks like Union Bank and other banks, we are having so many openings now. I am happy to announce, along with you, we are also having a very major breakthrough in Canara Bank, Bank of India. We are also having discussions in another 2-3 banks, nationalized banks only. Then Bank of Baroda, we are having a very big unit attached to BMS. So our future is definitely going to be strengthened day by day with honest people like you. So, and one more switch over of Indian Post Payment Bank, entire unit of IBOC, which was there, and they were not getting any recognition, any support from management. They also, just now he mentioned about Chennai EC, Sudhindraji and Satishji met us. Same way, last year we had our another executive committee at Ayodhya. At that time, representatives of Indian Postal and Payment Bank, they visited us, they put forth their constraints, and the same way as Aryaji described, we told them, yes, we will help you. About switching over, you have to decide, you have to take that option. After getting there, they did not, you may be knowing or may not be knowing that our wage settlement as per 8 joint note, which was already credited to their account, arrears were credited, they were taken back by the bank, suo motu. They said, no, we cannot afford to have these settlement terms, but with our involvement in the matter, we got it back. They have got the arrears now. They are now again up to the next stage of recognition of the union, and their internal promotion policy, that is also being declared. All the talks which were not at all happening for years together, that entire unit has now decided, or already they have resolved, and they are with us. They are affiliate of Bank BMS. So like that, we are going further and further. We are having an affiliate in Jammu and Kashmir Bank. We are having an affiliate in Kerala, Dhanalakshmi Bank. So right, entire India, now NOBO and BMS, we are covering, and now we are fortunate to have your strong unit. So we will look for prosperity of our trade union. So all the best. Thank you very much for being with us, and continue the march. Very shortly, in April only, our NOBO will also be conducting its All India Conference, where your representatives will also participate in our national body of National Organization of Bank Officers and Inter Alia, which is
affiliated to BMS. So directly you are also entering the national arena of trade union, which not only thinks of our own rights, but we also bother for people, bother for society. Our dedication to society is more important. So with this added flavor of nationalism, all of you would march on. All the best for your conference. We hope tomorrow your new dynamic team will take over with the new name and emblem. So now already our Mutti is with you, BMS is with you. So please be free to interact. For union, we always say, union cannot be complete without its active members. Many people talked about Sudhindra and Satish ji and their activism. That is always there, but without activities in the field. And now that the challenge of 50,000 membership is before you, so we will definitely urge that each one of you who will be going back from here will take on the remaining people who are diverted or may not be aware of the ideologies with which we are progressing. Union, it can be told, it is you and I on, that is always संपर्क और संवाद. ये जो हमारा नारा है और एक BMS का, कि हम कभी किसी से भी बात करने के लिए हिचकते नहीं हैं, हमारी बात रखने में कभी हम हिचकते नहीं हैं, और हमारा संपर्क हमेशा सभी लोगों से बना रहता है. इन आइडियाज़ के साथ आप आगे भी भविष्य में भी, जैसे आप कॉरपोरेशन बैंक में 90% से आप आज तक जीवित थे, वैसे ही आप in very short period you will be 90% plus in Union Bank of India also. With those wishes, I conclude. All the best. Thank you. Thank you, sir, for your kind words. Now it's time to all of us to listen to a leader with high intellectual ability and master in service conditions. It is none other than our President, Shri Y. Sudhindra. Over to you, sir, for presidential address. मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव. Along with it, I pay my tributes to Khan Bahadur Haji Abdullah Haji Qasim Sahib Bahadur, the founder of our corporation bank. Now, in Union Bank, we have two more banks, Andhra Bank. I also pay my tributes to the founder, Shri Patavi Sitaramaya, and Union Bank founder, Seth Sitaram Podar. Shri Girish Chandra Arya, the All India Secretary in charge Financial Sector, my General Secretary Satish Shetty, Shri Viraj Tikekar, General Secretary Novo, Shri Ratish, General Manager, Shri H.L. Vishwanath, General Secretary BMS Karnataka State, and today's driving force, Brajesh Kumar Singh, the Secretary of Reception Committee, former leaders, executives, retired colleagues, friends, ladies and gentlemen. I don't know whether I should say good morning or good afternoon. We are at just 12. Nevertheless, my greetings to you all on this momentous occasion of 22nd All India Conference of Corporation Bank Officers Organization. Well, today we have reached here after a lot of struggle. One, the merger was with us. We had to fight the merger. We fought it tooth and nail. We did not leave any stone unturned to stop the merger of our bank.
we were fighting with a mighty opposition, the government of India. We did not back out, except or falling short of meeting the highest authority, the Prime Minister of the country. We have met every possible person and appealed to stop the merger of Corporation Bank. Even that would have also happened but for the sudden demise of Sri Vishweshatirtha Swamiji of Pejawar Mutt, because he had given us a word that he will take us in a delegation to meet the Prime Minister. But before we could bring together the delegation, he passed away. Of course, that's now history behind us. The merger has taken place. Though with heavy heart of having lost the identity, we were trying to get into merging of the unions. What happened? There were two basic principles where we had to differ with the majority union. One was equitable distribution, equitable representation to all our representatives. Two was upholding the self-respect and integrity of CBOO. On both these counts, we received a raw deal. The majority organization was not at all ready for giving us equitable representation. And at the same time, they started to belittle CBOO. And they also started to hit the integrity pillar of CBOO. Friends, when it comes to self-respect and integrity, I will just take small minutes to take you to a small story. One merchant was going through the market. He wanted to buy a wealthy man. The moment he saw one item, he said, "This should be with me. Whatever be the cost, I will buy this." He went near it. It was a camel. You know, in Rajasthan, camels are also big assets. So he went to the seller, the merchant. The merchant was also equally very intelligent. So they both of them struck a deal. And ultimately, the seller sold the camel and the merchant bought it. He was very happy to see the majestic camel and he drove it to his home, or he rode it to his home. Because on the camel, there was a big carpet that was there. So he told this person, "Ye sab nikalo bhai." As he was removing it, his person found a small pouch. And immediately he came to his boss and said, "Sir, I found a small pouch. I do not know what it is." So the boss immediately opened the pouch to find 25 diamonds. And in fact, the servant was very happy. "Sir, हमको इतना पैसा मिल गया है इस कैमल के साथ." तब वो मर्चेंट ने बोला, "मैंने कैमल खरीदा है, ये डायमंड्स खरीदा नहीं है, मैं इसको वापस करने वाला हूं." And the servant pleaded with him, "Don't do it, sir. आपका लाइफ बन जाएगा." But still the merchant said no. He went to the seller and said, "भाई, मैंने ये पाउच मुझे आपका कैमल में मिला, तो मैं इसको आपको वापस दे रहा हूं." जैसे वो पाउच को उन्होंने हाथ से लिया, उनको पता चला कि उसमें है, तो तुरंत उन्होंने उस मर्चेंट को बोला, "सर, आपने इतना ईमानदारी से हमको वापस दिया है, तो आप जरूर एक लेना ही लेना है." The merchant was not ready. With a lot of discussion, ultimately the merchant said,
See, before coming to return it to you, I have kept 2 diamonds with me at my home. Then only I am returning the pouch. The seller was stunned. Sir, till now you were saying you don't want, and suddenly you are telling me that you have taken 2 diamonds. He immediately opened the pouch, he counted, he found 25. Sir, you have not taken any diamonds. The merchant said, the 2 diamonds what I have kept with me are my self-respect and integrity. This is what we fought for CBOO. We had to come out, and after coming out, many of you who were with us know the difficulty what we have undergone. Of course, it will be detailed in the General Secretary's report. That's why I will not take much on that. Friends, these are the 2 pillars which were passed on to us by our seniors. And we felt it is our responsibility to hand it over intact to the next persons. That is the reason why we fought tooth and nail, and in our fight, Shri Girish Chandra Aryaji has given support to us, and today we are out. But getting the check off, Aryaji was talking about Canara Bank. Even in Canara Bank, they had a similar situation. Check-off was not reversed. The membership was told, you enter in HRMS and get your membership. The union was told, you go and ask your members to enter in HRMS. That has not happened in Union Bank. All CBOO, entire CBOO membership was given check-off from back end in one stroke, in the same way when it was taken. This is what is the effort that has been put in by Shri Girish Chandra Aryaji. Sir, I want to once again tell, yes, when we came and met you, you said, whether you take our affiliation or not, if legally you are right, we are with you, we will get your check-off back. Whether you come as a CBOO, as a group or not, we are not worried. We will help you on the legal front. On the way, if you are right, we are with you. Yes, there was a lot of legal issues. The management had to take opinion out from outside, and only then it was given. Rightfully for us, after we had received the enormous help, we had to take the affiliation, and it is our bond and duty as well. That's what we have done. And when it comes to that, people suddenly talk saying it is a politically affiliated trade union. How come BMS can be a politically affiliated trade union? Just because of the color of the flag? If that is so, there are different colors. Even ABUC has got blue. There are a number of political colors, political parties that are having blue. Can we associate with it? No. It is the misinformation that is being spread to take away our membership. My appeal to those who have left CBOO or those who are on the wall thinking whether it is a political affiliated or not, you need not be afraid. It is not a politically affiliated, it is a apolitically affiliated trade union, just what others are claiming, but it's a claim from them, whereas it is not a claim, it is an actual here in BMS. Coming to the issue of minority status. Yes, we are in minority. What difference does it make whether minority unions were not there in the banks? In Corporation Bank we had, with 7 members there was a trade union. Even in Union Bank till recently we had a small unit. Apart from us there are few more units which are in minority. Whether there can be any differentiation in service conditions for a majority and minority union? It cannot be.
Whether promotions are given to majority union, minority union, it's not given. It cannot be. Union affiliation is only your personal issue. It cannot be traded for anything in the bank. All service conditions are same. It is the intent of the trade union that you are joining that you should see whether your trade union is having the intent to help the membership or not. The CBOO leadership has always displayed the intent. To name a few, the promotion policy. The moment the promotion policy was announced, the cutoff date was 1st April 2022. Or 2021, I think. The cutoff date was 1st April. In Corporation Bank, we had the tradition that the promotions would always spill over to March, April, May, June, which means entire batch of Corporation Bank would be excluded. Last year it has happened in the case of scale 5 to 6. One entire batch of Corporation Bank people lost the promotion because the majority union was not ready to take the case, despite the fact that we were behind them to take up with the management. This time, proactively, the moment the promotion policy circular was issued, we had sent this letter to the management along with the circulars that were issued by Corporation Bank declaring the results of those years. Management had no other option than to give relaxation. This is the intent what I am talking. The another intent, there was a circular to all regional officers to recover the military service pay from ex-servicemen. In Corporation Bank, we knew that there is some issue, legal issue, and it is in some court. Immediately we shot a letter and it was stopped. The tax on perquisites and loans, interest on loans. The initial court case was filed in Chennai High Court in 2008 or 2009, and since then in Corporation Bank, TDS was not being deducted on these perquisite items. Whereas in Union Bank of India, it was being deducted up to 2020. In 2021, when we came to know that, we immediately requested the majority union, they took up. That year it was not done. Again, this 2022, it was again started being deducted. There was an instruction to all our regional officers to calculate and deduct. It was not told by Corp Bank person that it is being deducted. We were on a visit to Mumbai. One of the deputy regional heads said, "Sir, आप सब आके बड़े-बड़े बात करते हैं, यूनियन लोग ये सब कुछ टेकअप नहीं करते हैं." हमने बोला, क्या टेकअप नहीं किया भाई? देखिए सर, हमको इतना टैक्स कटने वाले हैं, ये परक्यूजेट्स और कार परक्यूजेट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स में हमको टैक्स कटने वाले हैं। हमने बोले तो कटना नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट SLP का है स्टे। Immediately we shot a letter. And the instruction has come on 4th of March. It is the intent, friends. You see the intent of the trade union. You see the intent of its representatives. You join that organization. And as far as CBOO or today evening, whatever name we are going to give with the Union Bank, addition of the Union Bank, we are clear, we have the intent to take up the case of the members. And we don't stop at the management. If it is not done, we will reach to any extent, we will go to any extent to get the best of the benefits. The harmonization of benefits, friends. Harmonization of benefits has not taken place. One unique thing in Corporation Bank regarding housing loan, our interest was being debited on the last day balance. It was not a daily reducing balance. Even if we get salary on the last day, the reduced balance product would be taken for the entire month. You see the savings across 30 years of your repayment. It is unique.
Even Finacle, which is the banking solution, they did not understand, the Infosys people did not understand. When migration took place, our leaders sat with them and got this product and got it implemented in our bank. And we could, but the benefit of it, before we could accrue it for a long time, bank was merged, and now once again we are back to daily reducing balance. These are the benefits which have to be clinched. It is in the interest of the members, and it is as per the announcement made by the finance minister and also the gazette notification of Government of India. We are not asking anything beyond that. For that, we require the support of you all. If anybody can feel that I can do better than the people sitting today, yes, you are welcome. We don't sit for take the chair. The chair is always vacant, anybody can come. Today I am there, tomorrow one of the more worthy person can come and sit. And I will also support. Friends, in fact, I had lined up to speak a lot, but taking into account the time constraint what we are having and the business session what we are having, which we have to have immediately after this, I would like to conclude saying that strengthen the hands of your organization, strengthen the hands of your leaders, and you will get your benefits. Thank you, friends. Jai Hind. CBOO Zindabad. Thank you, sir, for the presidential address. Friends, it is our duty to honor our guests, to express our gratitude, love, and affection. It is also an occasion to make it a memorable event. Now, we will present mementos to our guests for gracing the occasion. I request Shri Devkan Pawar, our Circle Secretary, Bangalore, to present a memento to our chief guest, Shri Girish Chandra Arya. Thank you, gentlemen. I request Sri Suryanarayan Rao, our treasurer, to present a memento to our guest of honor, Sri Viraj Tikekar. Thank you, gentlemen. I request Shri Anand Kumar Sahu, our Circle Secretary, Ahmedabad, to present a memento to Shri Ratish, our General Manager. I request Sri Y.S. Anand, Regional Secretary, Bangalore South, to present a memento to Sri H.L. Vishwanath, Guest of Honor. I request Sri Manoj Chinchwade, Regional Secretary, Belgaum, to present a memento to Sri Dinesh Hegde Ulepadi, Advocate. Okay. I request Sri Naveen Chandra Jha
Regional We are now inching towards the last agenda of inaugural program, that is proposing vote of thanks. This pleasant task will be performed by a Neta and driving force to this 22nd All India Conference, Shri Brijesh Kumar Singh, Secretary, Reception Committee. नमस्कार। किसी भी बृहद कार्यक्रम का समापन में एक परिपाटी रही है कि हम उनको धन्यवाद देते हैं, और इसी परिपाटी के तहत मैं ब्रजेश कुमार सिंह आपके सामने उपस्थित हूँ। लेकिन वास्तविकता ये है, सच्चाई ये है कि करते हो तुम कन्हैया बस नाम हो रहा है। तो जो भी होता है वो भगवान के द्वारा लिखित है। जो कुछ भी हम करते हैं, चाहे वो धन्यवाद हो या और कुछ भी हो, वो सब पहले प्रपोज होता है। उसी के तहत इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट आज उपस्थित हमारे बीएमएस ऑल इंडिया सेक्रेटरी और फिनेंशियल सेक्टर के इंचार्ज श्री गिरीश आर्या साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं इनके बारे में कुछ भी कहना मेरे द्वारा सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। ये विराट हृदय के लोग हैं। हमारे प्रत्येक मुश्किल घड़ी में हमेशा साथ दिया है। जैसा कि सारे लोगों ने बताया, हमारे जनरल सेक्रेटरी ने बताया, प्रेसिडेंट साहब बताए कि किस तरह से हमें वहाँ से निकाल कर यहाँ तक लाए। कोई बात। और सर, आपका जो ओजस्वी वक्तव्य हमारे बीच आप रखे, इसके एवज में अगर हम कुछ कहते हैं तो वो शब्द हमारा बौना साबित होगा। आपके बारे में कुछ भी कहना, ये हम बस इतना ही कह सकते हैं सर कि आपके द्वारा दिखाया हुआ मार्गदर्शन जो आपने हमें दिया है, जो एक टास्क भी दिया आज अपने वक्तव्यों के द्वारा, उसका मैं निर्वहन करूंगा। और हम सब बेहतर कार्यकर्ता जब होंगे तो निश्चित तौर से एक बेहतर संगठन भी तैयार कर देंगे सर। आप इतना दूर से चल के आए, आप दिल्ली से यहाँ तक अति व्यस्त कार्यक्रम में भी समय निकाला, इसके लिए मैं आपको कोटि से धन्यवाद देता हूँ सर। हमारे बीच उपस्थित हैं स्थानीय स्तर पर जो समस्या आती है, क्षेत्रीय स्तर पर जो समस्या है, उसका निदान करने के लिए बीएमएस के ही एक और योद्धा जो इसी धरती से हैं, इसी कर्नाटक की धरती से हैं। मैं बीएमएस के कर्नाटक स्टेट के जनरल सेक्रेटरी श्री एचएल विश्वनाथ सर का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो हमेशा एक बेहतर तालमेल के तहत किसी भी समस्या को आसानी से सुलझाते हैं। सर, मैं आप हमारे आमंत्रण को स्वीकार किए और यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस मंच पर नोबो के जनरल सेक्रेटरी उपस्थित हैं, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं। मैं श्री विराज टिकेकर साहब का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपना समय निकाला और यहाँ तक आए हैं।
कोई भी संस्था तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक प्रबंधन और हमारी जो कार्य शक्ति है अर्थात मैनेजमेंट और हमारा वर्कफोर्स जो है उस दोनों के बीच में एक बेहतर तालमेल स्थापित ना हो। और अपने सौम्य स्वभाव और एक बड़ा सोच के धनी आधार स्तंभ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के श्री आर सतीश सर जो महाप्रबंधक हैं हमारे यहाँ, और यहाँ ट्रांजैक्शंस के जीएम हैं CONX मैंगलोरू से हैं और हमारे ये मेंबर भी हैं। मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार किया सर और अपना समय दिया, इसके लिए कोटिशः धन्यवाद। धन्यवाद के क्रम में हमारे बीच बहुत ऐसे महान योद्धा, यूं कहा जाए तो भीष्म पितामह भी बैठे हैं। उनके लिए मैं और ज़्यादा क्या कह सकता हूं, बस इतना ही कहता हूं कि सर आप लोग इसी तरह अपनी शीतल छत्र छाया को हमारे ऊपर, हम सब के ऊपर बरकरार रखें, एक आशीर्वाद के रूप में देते रहें, तो हम निश्चित तौर से CBO के उस ग्लोरी को यूनियन बैंक में नया CBO स्थापित करके दिखाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं सर। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारा समस्या हमारे बीच आन पड़ा, उस समस्या के बीच भी अपने आप को डिगाए रखे, उस समस्या के बीच भी अपने आप को तमाम मुश्किलों में खड़ा रखा और हमेशा एक चट्टान के तरह अपने जिंदा रहने का परिचय दिया है। वैसे उस व्यक्तित्व को जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वाई सुधींद्रा साहब, उनके लिए एक पंक्ति कहता हूँ, कोई उस पेड़ से सीखे मुसीबत में अरे रहना, जिन्होंने बाढ़ के पानी में सीखा है खड़े रहना। सोचिए कितना बड़ा समस्या आने के बाद भी लीगल प्रोसेस के तहत निकले और इसे उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और हमारे सदस्यों का आवाज़ को बुलंद करते रहे। मैं उनके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। अब वक्त आता है इस परिवार के मुखिया, इस परिवार के CBO परिवार को जो लेकर पिछले कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से जो हेड किए, वैसे व्यक्तित्व के बारे में आप लोग समझ रहे होंगे। मैं उनके बारे में एक ही चीज़ बोल सकता हूँ, दो पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर का, है कौन ऐसा विघ्न जग में जो टिक सके वीर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। सर आप इस विराट रूप में अपने आप को साबित किया है और उस पर्वत को और उस पत्थर को पानी की तरह बहाया है। मैं इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद देता हूं सर। हमेशा इसी तरह अपने सदस्यों के आवाज़ को बुलंद रखेंगे और हम नए जनरेशन के लोग हमेशा आपके साथ अडिग रहेंगे और आपके बताए गए पद चिन्हों पर चलकर उस पहाड़ की ऊंचाई को भी हम प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद शब्द तो अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द होता है।
मुझे याद है शिव मंगल सिंह सुमन जी का एक लाइन, एक पंक्ति हम लिख कर के भी लाए हैं। इस पथ में जिस जिस लोगों का स्नेह मिला है, विश्वास मिला है, उस राही को हमारा धन्यवाद हृदय की गहराई से। और मैं अंत में धन्यवाद देना चाहता हूं, किसी भी कार्यक्रम में बहुत ऐसे लोग हैं जो परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ खड़े होते हैं। जैसे पतंग आकाश में जब उड़ता है तो कोई धागा नहीं उड़ाता है उसको, कोई बच्चा नहीं उड़ाता है उसको, कोई हवा नहीं उड़ाता है उसको। हम सब जब मिलते हैं तो वो पतंग अपनी ऊंचाई को उस गगन में स्थापित करता है। ऐसे ही हमारे परोक्ष रूप में बहुत सारे हमारे साथी हैं, सदस्य हैं, CBOO के महान योद्धा हैं जो अभी भी हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो सामने नहीं हैं कहीं। उस कल जब फोटो होगा तो उनको अब कहीं नहीं देखेंगे सर, लेकिन वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। रात को कल 12 बजे स्टेज कमेटी के, ऐसे सारे कमेटी के हेड्स से लेकर के सारे लोग लगातार हमारे लिए काम कर रहे थे। मैं उन सारे कमिटीज हेड्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं कुछ लोगों का नाम भी लूँगा, अगर किसी का नाम छूट जाता है तो ये मत समझिएगा कि आप उसके नहीं हैं। निश्चित तौर से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जो भी हैं सबको धन्यवाद। स्टेज कमेटी की हेड वर्षा मैडम जी को बहुत धन्यवाद, लता मूर्ति जी को, मंजुला मैडम को, रजिस्ट्रेशन कमेटी के श्री शशिधर सर को, नरेश जी को, एकोमोडेशन कमेटी के श्री प्रवीण जी को। प्रवीण जी कल रात में 3 बजे गए हैं। मैं उनको पूछा कि भाई प्रवीण जी अब चले जाइए आप, तो प्रवीण जी बोले नहीं सर, 1:45 पे एक बस आ रही है, उनको रिसीव करेंगे उसके बाद ही जाएंगे। सच बताते हैं दोस्तों, हमारा एक एक रुआं खड़ा हो जाता है हमारे ऐसे डेडिकेटेड वर्कर के लिए जिन्होंने, और शायद वो नज़र भी नहीं आए कहीं। मैं दिल की गहराइयों से उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे कैटरर्स कमेटी के प्रधान श्री राधे सनाई सर और भी उनके सहयोगी, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। ट्रांसपोर्टेशन कमी के तुपत साहब, MC के लिए शिल्पा मैडम, लारा मैडम, मंजुला मैडम जो पीछे से उन्होंने वो किया है, उनको भी धन्यवाद, सहयोग किया है। जो भी सहयोग करने वाले लोग हैं, इस इतने सुंदर भवन में हमें जो व्यवस्था दिया है, ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। रियली सर, मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली, या यूं कहिए मैं अपने भाग्य पे इठला रहा हूं, जो इस संघ के इतने बड़े मंच में, नागपुर के बाद शायद यही मंच है। हमारे बड़े भाई से बात हो रही थी, बोला इस सभागार के मंच से मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, आपके लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं। इसके लिए मैं इस संघ निकेतन के सारे सदस्यों को, स्टाफ के सदस्यों को, जब कभी मैं रात को आ जाता था, कल मैं अचानक 11:30 बजे के बाद फिर आया तो यहाँ से 1:30 बजे लौट के गए, तो उस समय वो हमारे लिए खोल रहे थे, यहाँ के स्टाफ हैं, तो मैं उनको छोटे स्टाफ हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वारके पुलिस स्टेशन है बस बगल में, वारके पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल्स, वहाँ के ऑफिसर्स, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। इंडियाना हॉस्पिटल, जब कभी हम गैदरिंग करते हैं, उस क्रम में हमें कहीं छोटा मोटा कैजुअल्टी, चोट घाट लगने का शक रहता है, तो इसके लिए इंडियाना हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब, उनके स्टाफ मेंबर्स, नर्सेस, हम सबको धन्यवाद देते हैं। और हम जिनका, जो हमारे लिए खाने का अरेंजमेंट किए, भोजन की व्यवस्था जिन्होंने की, कामत कैटरर्स सर को मैं धन्यवाद देता हूं।
डेकोरेशन के लिए भक्ता सर को मैं धन्यवाद देता हूं और भारत के उन नौनिहाल बच्चों, सर मैं आप लोग को बता दूं, वो जो बच्चे आए थे वो ऑर्फन हाउस से हैं, बहुत ऐसे लोगों से हैं। हम आपके बताए हुए पद चिन्हों पर चलकर हमें ऐसे लोगों से, शोषित वंचित जिनका कोई नहीं है, उनके साथ अपना कदम रखेंगे। पहले भी रखे थे सर। आर्या साहब, मैं बोलने लगूंगा तो हमारे कुछ साथी हैं बोलते हैं इसको माइक, कल ही बोल रहे थे हमारे नितिन अन्ना कि उनको माइक दे दीजिए तो पूरी रात बोलते रहेंगे। ऐसा नहीं है, मैं सच बताता हूं सर। हमारे यहाँ CBO का एक कल्चर रहा है, हम लोग एक एक पैसे का हिसाब ही नहीं, हम इतना कमिटमेंट है हमारे अंदर कि तूफान भी आ जाए हमें कुछ नहीं कर सकता। हम वहीं रहेंगे और वही हमारा शक्ति है और उस शक्ति को लेकर के चलेंगे तो बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा करेंगे। यही बात कहते हैं सर। और मैं अंत में धन्यवाद को भी धन्यवाद देता हूं और अपनी बात को विराम देता हूं। लेकिन अगर मैं CBO के बारे में अंत में 2 पंक्ति नहीं सुना दूं तो शायद मेरा ये धन्यवाद भी इस काबिल नहीं रहेगा। CBO के लिए मैं 2 लाइन बोलता हूं कि धरती के गोद में खिलते हैं कोटि फूल, धरती की गोद में खिलते हैं कोटि फूल, बिरले ही याद रखते शेष जाते लोग भूल। कौन किसे याद रखे, कौन किसे जाए भूल, जगत हित जो काम आते जगत न पाते उनको भूल। CBO हमेशा हमारे दिल में रहेगा, वो उन्हें उसको कोई मिटा नहीं सकता है। हम CBO के सिपाही हैं, भले आज नाम बदलेगा, आज हम नाम बदलेंगे क्योंकि वो हमारी प्रतिबद्धता है, उसको हम करेंगे। लेकिन CBO हमेशा जिंदाबाद था, है और रहेगा। CBO जिंदाबाद, CBO जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. With this, we'll be bringing the curtains down on the inaugural session of the conference. We'll break for tea and reassemble in about 15 minutes for the business session. I request all the delegates to maintain it to the time schedule as the agenda for the day is big enough to keep us in race with the time. Thank you one and all. Dhanyavad.